opportunity of introducing a media person who aims to be a Kathakar in future as the master of ceremony today. I am very happy and pleased to introduce Srimati Deepa Singh, who happens to be a criminal lawyer working in the field of media. Deepa Singh is a senior digital content and communication specialist with a passion of creating engaging and impactful stories. Some of the videos you have seen, she had part of. She started her career in Times Group as a content curator and then moved to Sahara, where she produced news and current affairs shows. She then worked at Reliance Entertainment in the movie, marketing and digital content creation, and worked on projects like Kites and Three Idiots. You may be pleased to know Deepa ji is a director of Bhishma Democratic Research Institute, which works with political thing in Bharat. She's a visiting faculty in mass communication and journalism in the University of Mumbai, and she is currently the editor of Hindu Post Digital. Thank you. Please, Deepa ji, it's all yours. Thank you, Gunaji. Namaste, Pranam. Welcome to World Hindu Congress 2023. But before we commence our journey into the inaugural session of World Hindu Congress 2023, it's time for all of us to follow an important modern ritual. So are you ready? So sit straight on your seats, take a deep breath, and now take out your mobile phones and switch it off. Please switch it off or put it on flight mode. So thank you. Now we can focus and be present both mentally and physically. A humble request from all of us that instead of wasting time in photography and selfies, it's better we live in this moment. For your convenience, the washrooms are located on the left side of this hall. And in the unlikely event of fire or any other emergency, there are 6 exit doors on the left side and 3 on the right side. Your safety is our priority and we appreciate your cooperation. Thank you. Now it's time for our house rules. I request you all, please listen carefully. Under our house rules, the delegates are free to use the information received in the plenary session or concurrent conferences, but neither the identity nor the affiliation of the speakers nor that of any delegates may be revealed. Speakers and delegates are free to voice their own opinion without concern for their personal reputation or their official duties and affiliation. The House rule is intended to promote public discussion of the views expressed at this Congress, but without attributing those views to any individual or organization. Please note that there are no photographs or recordings of these sessions on your personal devices. I request you, please respect the privacy of speakers and delegates. Respected delegates, today our strength as proud Hindus stands on the sacrifice of our brave ancestors. Let's honor and acknowledge their contributions, and shortly we will observe a minute of silence in their memory. Since the invasion of Alexander in 326 BCE, Hindus and Hindu ancestors valiantly faced attacks from various forces such as Greeks, Scythians, Parthians, Kushan, Shak, and barbarian Hun. From 7th century onwards, waves of Islamic invaders, including Arabs, Turk, Mongol, and Mughals, relentlessly attacked our motherland. Starting in 15th century, European Christians like Portuguese, Dutch, French, and British also sought to impose their dominance on our homeland. Throughout these difficult periods, our great ancestors courageously upheld their struggle for survival. Hindus stood firm.
defending themselves with dignity against the tides of invaders. Through immense sacrifice, unwavering courage, our brave ancestors ultimately rose from mortality to immortality. Post Second World War, Hindus witnessed the sacrifice of millions during the partitions. Since 1947, there has been a continuous and silent genocide of the Hindu community in Pakistan. The 1971 Bangladesh Liberation War witnessed the tragic sacrifice of millions of Hindu lives, a chapter etched in our history. Hindu faced murder, attacks during the Taliban rules in Afghanistan. From 1986 onwards, Hindus have faced genocide in Kashmir. Globally, the Hindu community has endured numerous instances of persecution with numerous lives lost. In solemn remembrance of the countless souls lost, let us observe a minute of silence. May this sacrifice serve as poignant reminder of the enduring strength and resilience of Hindu community in the face of adversity. Dear delegates, let's start 1 minute silence for our ancestors. Om Shanti Shanti Shanti. Respected delegates, many of us are aware of the powerful words of Swami Vijnananand. Respected delegates, many of us are aware of the powerful words of Swami Vivekanandaji's 1897 lecture in Lahore. He said, Hindu will stand for everything that is glorious, everything that is spiritual. He also said, here I am, one of the least of the Hindu race, yet proud of my race, proud of my ancestors. I am proud to call myself a Hindu. World Hindu Congress is a global platform for Hindus to connect, share ideas, inspire one another, and impact the common good. This event is a collective endeavor to elevate the visibility, acceptability, and respectability of Hindu society while reclaiming our rightful place on the world stage. The World Hindu Congress is the third congregation of Hindus from around the world, and Thailand's role as the host holds particular importance due to the shared Hindu heritage between Southeast Asia and global Hindu communities. Jayasya Ayatanam Dharma, which means Dharma, the abode of victory, of the theme of this Congress. Let us aim to strengthen Hindus worldwide by fostering unity. Let's come together, deliberate, and strive for a noble world. As Swami Vivekananda ji said, by our action, let's be ready to show that Hindu is the highest word that any language can invent and make the principle of Dharma shine brightfully. Dear delegates, in the beginning of the Mahabharata, on the battlefield of Kurukshetra, Bhagwan Krishna blew the conch, symbolizing the ultimate victory of Dharma. As we convene at the World Hindu Congress, it's a moment to announce
the Hindu resurgence with the resonating sound of Shankhnad. I humbly invite Swami Vijnananand ji for Shankhnad. Swami ji. ठीक है ठीक है बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी जी. The lighting of the lamp symbolizes the triumph of knowledge over darkness. Our timeless tradition resonates with the illumination of wisdom. Lighting of lamp is a sacred ceremony. We request the dignitaries to remove their footwear for lighting the lamp. Now I request Shri Sushil Kumar Saraf ji, Chairman of Organizing Committee World Hindu Congress 2023, to escort डॉक्टर मोहन भागवत परम पूजनीय सर संघ चालक जी, माता अमृतानंदमयी देवी जी अम्मा, स्वामी पूर्णात्मानंद जी महाराज, सतगुरु बोधिनाथा वैलन स्वामी जी, श्री दत्तात्रेय होसबले जी फॉर दीप प्रज्वलन. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतांगमय. ओम शांति शांति शांति. I request dignitaries to take their seats on the stage only. Amma परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, स्वामी पूर्णात्मानंद जी महाराज, सदगुरु बोधिनाथा वैलन स्वामी जी, दत्तात्रेय होसबले जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज. और मिलिंद परांदे जी.
Sorry, friends. Shri Raju Manwani ji, I request you to come on the stage. My mistake. Respected delegates, French Hindu journalist Francois Gauthier participated in the highly successful World Hindu Congress in 2014 and 2018. He shared his thoughts on the event stating, and I quote, "Many of us felt that history had been made here. For the first time since the last Hindu empire of Vijayanagar, Hindus proudly gathered to remind the world that every sixth human being on this planet is the inheritor of the most ancient living knowledge. Suddenly, Hindus came out of hiding, traveling from across the world. They stood together and shouted, 'We are here. We have been on this earth at least 10,000 years and we have much to give to the world.' The new Hindus have arrived. They are savvy, connected, and hungry for change and for its partner power. I have attended many such conferences and seen that they provoke few real changes. But this one was different. It was tangible symbol, a sign, an occult happening. Swami Vivekananda's and Sri Aurobindo's call for Renaissance of Bharat has begun. These words underscore the global impact and success of the World Hindu Congress. Now let's dwell deeper into the origin of this global movement. The driving force behind this initiative is a person who has traveled many countries and strategically organized national conferences to position Hindu society and to make Hindu community visible, acceptable, and respectable. He is a scholar of Panini grammar and Hindu philosophy. He is a Swayamsevak and a Pracharak. He is a graduate of IIT Kharagpur and initiator of World Hindu Congress and World Hindu Economic Forum. I extend a warm invitation to Swami Vijnananand ji, the Joint General Secretary of Vishwa Hindu Parishad, for introductory note. Swami ji. Namaste. The inaugural World Hindu Congress was organized in 2014 in the New Delhi to commemorate the 125th birth anniversary of Adya Sarasangchalak Param Pujnya Dr. Keshav Baliram Hedgewar, the visionary founder of Rashtriya Swayamsevak Sangh, and to celebrate the golden jubilee of the Vishwa Hindu Parishad. Second edition of the World Hindu Congress took place in 2018 in Chicago, USA, in honor of 125th anniversary of historic Chicago lecture delivered by Swami Vivekanand at the Parliament of World Religion. World Hindu Congress 2023, originally scheduled for 2022 in Bangkok, was postponed to 2023 due to the COVID-19 pandemic. Year 2022 hold a special significance as it marked the bicentenary of the birth of Srila Sri R. Mugam Naular, born in Jaffna, Sri Lanka, the pioneering luminaries who kindled the flame of first Hindu Renaissance movement in 1848. This moment in time offers us profound opportunity to pay our sincere tribute and express our profound gratitude to this remarkable personality. In the year 2023-2024 will commemorate the bicentenary of the birth of Maharshi Dayanand Saraswati, yet another towering personality whose pivotal role in revitalizing Hindu Dharma and rejuvenating Hindu society deserve our admiration and recognition. This World Hindu Congress affords us the opportunity to acknowledge and honor his invaluable contribution.
It is with the great reverence and admiration that we acknowledge the historic milestone of the establishment of Hindu Pada Sahib by indomitable Chhatrapati Shivaji Maharaj in 1674. The year 2022-24 marked the 350th anniversary of the momentous chapter in Hindu history. On this momentous occasion, we extend our heartfelt tribute to the guardian of Hindu Dharma and society, who through unwavering determination and devotion liberated our sacred land from the clutches of Mughal and Adil Shahi Sultanate. He emerged as a stalwart defender against the forces of Islamic expansionism. In the annal of time, the year 2023-2024 also marked the 60th anniversary of the Vishnu Hindu Parishad, and an organization that has played a pivotal role in restoring pride among Hindu in their glorious heritage and has made efforts to unify Hindu across the diverse line. The most prominent example of the VHP contribution to the Hindu resurgence movement, which was the monumental agitation by Hindu demanding the restoration of the holy site of birthplace of Bhagwan Ram to the Hindu society. On 22nd January 2024, we eagerly await the Pran Pratishtha ceremony of the Bhagwan Rama Vigraha, which will be enshrined in the magnificent Sri Ram Janmabhoomi temple. This monumental occasion carries profound significance for the Hindu worldwide and stand as a testament for our enduring Shraddha and unity. The year 2023-24 also marked the 108th birth anniversary of Swami Chinmayananda Saraswati, founder of Chinmaya Mission, also one of the founders of Vishnu Hindu Parishad. We are deeply grateful for the remarkable contribution of Hindu sannyasi and the leader of our cause. On this World Hindu Congress, we take a moment to honor and remember our ancestor, Rishi, Muni, King, warrior, freedom fighter and leader, who for generations made immeasurable sacrifice to safeguard our Hindu society. Their unwavering dedication and indomitable spirit continue to inspire us, serving as a guiding light in our journey forward. After independence, Hindu and term Hindu were very vilified by the ruling political class, led by Jawaharlal Nehru and their so-called academics and intellectuals. The general Hindu society and many Hindu organizations began to retreat from the Hindu identity during this difficult period. Rashtriya Swayamsevak Sangh stood firm during these most challenging times. Sangh kept the flame of Hindu identity alive and burning through their Sakha and through Sakha. Param Pujne Sar Sangh Chalak Ji Vijayadashmi and Tritiya Varsh Samapan Udbodhan. Then came the Ram Janmabhoomi movement. Once again, Hindu identity became prominent and resounding slogan, Garv se kaho hum Hindu hain. However, from 1992 onward, Hindu identity has started receding once again. Name Bharat began disappearing from our collective memory and mainstream usage, while India and Indic become more prevalent. On the platform of World Hindu Congress and several associate forums, a decision was made to popularize the term Bharat and refrain from using India, Indian and Indic. The aim was to make Hindu identity visible, acceptable, respectable worldwide, advocating the use of only Hindu and Hindu Dharma. The goal was to make word Hindu and Hindu Dharma popular and fashionable in the modern society. Through continuous relentless efforts, we are witnessing the positive changes. The use of word Bharat is once again returning and becoming mainstream. Any world leader profoundly identify themselves as a Hindu, marking the profound strengthening of the roots of the Hindu resurgence movement. Namaste. धन्यवाद स्वामी जी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
Respected delegates, as we embark on the wonderful gathering, I am pleased to invite Shri Sushil Kumar Saraf ji for welcome address. He is the founder and chairman of Saraf Global Group in Thailand, a pioneering entrepreneur recognized with the Pravasi Bharatiya Samman Award in 2017. With 4 decades of experience in the diamond industry, he stands as a reliable gold diamond provider with offices in Hong Kong and Bharat. In addition to diamonds, he has pioneered Thailand's first BPO company and a significant biomass-based power plant. His investments also encompasses Goa's defense industry. Shri Sushil Kumar Sharafji serves as the president of VHP Association Thailand and as the vice president of Central VHP Bharat. He is an advisor to Thailand's Board of Trade and hold a significant role as a governing council member of the World Hindu Economic Forum. Shri Sushil Kumar Sharafji. Namaste, Swagatam, Sawadikap, and a very warm welcome to you all. My sincere pranams and respect to Swami Purmatanand Ji Maharaj, the most senior representative at the World Hindu Congress, Mata Amritanand Mai Ji Devi, Sadguru Bodhinath Brilliant Swami Ji, Dr. Mohan Bhagwat Ji, परम पूजनीय सर संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माननीय संतका जी स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज श्री दत्तात्रेय होसबले जी सर कार्य RSS and all esteemed dignitaries, governors, ministers, parliamentarians, diplomats, scientists, educationists, professionals, and leaders from various fields, including trade and industry, as well as the head of various Hindu organizations, respected delegates, sisters, brothers, and friends. We attended as delegates, and I was the speaker at the first World Hindu Economic Forum in 2012 in Hong Kong. Right there, we decided that the following year we would host and organize the World Hindu Economic Forum 2013 in Bangkok. As Swami Vigyananand Ji pointed out, the inaugural World Hindu Congress took place in Delhi, Bharat in 2014 and then in 2018 in Chicago. It was during that time we made plans to host the World Hindu Congress in Bangkok. Originally, it was scheduled for 2022, but due to COVID pandemic, it got postponed to 2023. A lot of you might have this question, why we were interested in hosting World Hindu Congress in Bangkok. First, Hindu and Buddhist are brothers in Dharma, and their civilization has a strong presence in the ASEAN region. We have the Chakri dynasty in Thailand, where the king is referred as Rama. We are grateful the king, His Royal Highness and the Kingdom of Thailand for providing us opportunity to live and practice our Dharma in Thailand. I invite all the delegates to visit Grand Palace after the Congress, where the entire Ramayana is beautifully painted on the walls. Thailand is blessed by many temples. In Buriram, Prasad Phanom Rung Hindu Temple. In Nakhon Ratchasima, Prasad Hin Phimai Temple, which can be referred as Bhima. In Lopburi, Phra Prang Samyot Temple. Additionally, Bhagwan Ganesh is worshipped along with Shiva and Brahma all over Thailand by Thai devotees. Furthermore, the historic name of Vietnam was Champa, which they later changed to Annam and then Vietnam. Since my city names from that time included
Amravati, Vijaya, and Panduranga. The first historical monarch of Champa was known as Dharma Maharaj Sri Bhadravardhan. In Laos, there is evidence of ancient Hindu influence dating back to 6th century. Wat Phu Hill was once called a Linga Parvat. At that time, a temple was dedicated to Bhadreswara Sivalinga. In Cambodia, there was a Chakravarti king named Prince Jayavarman II. King Suryavarman II constructed the largest religious structure in the world, the Angkor Wat temple complex, which spanned over 402 acres. In Indonesia, there is a Prambanan temple, the largest Hindu temple complex in the country, and the second largest Southeast Asia after Angkor Wat. Some of the great kingdoms from this Asian region includes Majapahit Kingdom of Indonesia as well as Sailendra and Srivijaya kingdoms. Secondly, Bangkok as central hub of Asian region holds the immense strategic importance in the realm of business, economy, and culture. Geographically positioned in the heart of Southeast Asia, the city serves as a central juncture for economic activities and public trade within the Asian community. Its well-developed structure, international connectivity, and business-friendly environment make it a preferred destination for regional and global enterprises. This cultural richness not only fosters a dynamic atmosphere but also positions Bangkok as a key player in shaping the socio-cultural landscape of the Asian region. With a population of 660 million, which is third largest in the world. The main idea behind the World Hindu Congress is to provide a global platform for Hindu society to deliberate and formulate solutions to the challenges being faced by Hindus throughout the world and to devise workable and tangible solutions that can be implemented. So the plan was to gather representatives from all over the world in Thailand to think about the objective of the World Hindu Congress and discuss how we can achieve the greater aim of global Hindu resurgence movement. For Hindu society to move forward, it has to be strategically placed to influence crucial areas such as the economy, education, media, and politics. We have identified 7 pillars of Hindu society to take the Hindu community forward. The purpose of the World Hindu Congress is not just to organize a congress or conference, it is to develop the institutional framework for Hindu society in strategic areas such as economy, education, media, politics, women, youth, and Hindu organizations. I am proud of all 7 conferences coordinators who did excellent work, including identifying speakers, subject, and so on. Member of the organizing committee, I am not mentioning all the names by committee members, just as few like Raju Manwani, Nagaraj Prasad, Pradeep Singhal, Viren Parikh, Vadachari Rajan, Ashok Chawla have all made efforts from accommodation and logistic to food and so on to make your stay and experience memorable. I would like to especially thank my wife and my family for taking care of all the guests residing with us for 1.5 months. As the chairman of the organizing committee, I congratulate my team of World Hindu Congress 2023 organizing committee, including all volunteers, for making this momentous event possible. As the organizing committee, I, along with my team, personally visited Lucknow to invite Mahant Yogi Adityanath Ji Maharaj
He accepted our invitation and confirmed his attendance. However, he mentioned that due to ongoing election, his plan might change at the last minute. So we maintained our regular contacts with him. On the 21st, he informed me that after his election tour in Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, he was given the responsibility to address political rallies in Telangana until November 28. His commitment to attending our event, despite the demanding schedule, is deeply appreciated. Although circumstances prevented his physical presence, his spirit and best wishes accompanying us, igniting the flame of success for conference. I am humbled and gave great respect to all the delegates from 60 countries, 2000 plus delegates for taking time from busy work, paying their own tickets, registration and accommodation. We especially gratitude to all the speakers and chairpersons for their knowledge, expertise, and active participation to provide a quality, knowledgeable, and informative World Hindu Congress 2023. I have firm belief that this World Hindu Congress will strengthen the root of Hindu resurgence. Thank you. Jai Sri Ram. Dhanyavad. Unveil Prabodhan, a carefully curated compilation featuring handpicked historical and contemporary articles published to enlighten our esteemed delegates. Now, to present Prabodhan 3, I extend a warm invitation to the stage for our young editors, Murli Krishna Mageshan from New Zealand, Brinda Kotak from Bharat, Sohini Sarkar young editors, Murli Krishna Mageshan from New Zealand, Brinda Kotak from Bharat, Sohini Sarkar from USA, and Dr. Deepto Bakshi from Bharat. After generation, respected delegates, this book aims to provide insight into underlying thoughts that have inspired generation after generation of awakened Hindus to continue to stand firm and defend their right to live with dignity and respect. Your copy of Prabodhan 3 has been included in your delegate bags. I encourage you all to take the time to read it on your way back home. Dignitaries to please launch this book, Prabodhan 3. I request the dignitaries to please launch this book, Prabodhan 3. धन्यवाद. धन्यवाद. In World Hindu Congress, we recognize individuals and organizations for their outstanding contribution for Hindu society. To announce this year's Sammanit organizations and individuals, and I request Shri Milind Parandeji. He is the Secretary General, Vishwa Hindu Parishad, VHP Bharat, and Pracharak of Rashtriya Swayamsevak Sangh. He did his Masters in Chemistry. Previously, he has shouldered several responsibilities in VHP, such as Joint General Secretary, Central Secretary and National Joint Convener for Bajrang Dal. I request Shri Milind Parandeji to come on dais. First such important organization is Bharat Sevashram Sangha. Yugacharya Srimad Swami Pranavanandaji Maharaj is remembered for leading efforts to bring modern Hindu society
into a new era without compromising the essential values of ancient traditions of Hindu spirituality and without giving up the patriotic devotion and love of motherland. Bharat Sevashram Sangha began as Pranav Mutt in 1917 in Bajitpur, which was originally part of Akhanda Bharat and is now in Bangladesh. Swamiji founded the Hindu Rakshak Dal as a village defense force to protect the Hindu community. He believed that proper preparation for self-defense would provide security and prevent violence against Hindus. In 1923, the organization was officially named Bharat Sevashram Sangha. This year marks the 100th anniversary of its formal establishment. The felicitation reads, the organizing committee of the World Hindu Congress 2023 Bangkok is honored to express deep appreciation to Bharat Sevashram Sangha, founded by Srimad Swami Pranavanandaji Maharaj through profound sacrifice. The Bharat Sevashram Sangha stands as a testament to the unwavering commitment. It holds the distinction of being the first Hindu organization in modern times to cultivate a structured, disciplined, cadre-based organization. In the face of challenging times, the Sangha valiantly protected and defended Hindu society. The Bharat Sevashram Sangha has nurtured a new generation of sadhus and sannyasis who are brave, courageous, and selflessly dedicated to the cause of Hindu Dharma. Their sannyasis and brahmacharis have established numerous educational and humanitarian service institutes dedicated to serving the Hindu community and preventing religious convergence. The Bharat Sevashram Sangha has rekindled the flames of courage and selfless service, reigniting the spirit of dedicated humanitarian work. I invite Pujya Swami Purnatma Nandaji Maharaj to accept the felicitation. I request Param Pujnya Sarsang Chalak ji or Shri Sushil Sharaf ji to felicitate Purnatmanand ji Maharaj. I request Swami Purnatmanand ji Maharaj to awaken us with his insights and wisdom. Please, everybody, join with me. Vande Matram. So many people are not sound coming. Again, Vande Matram. Bharat Mata Ki.
भारत माता की वंदे मातरम. This is the third time I'm attending the World Hindu Congress. This is the first time I put in little chutney. I talk in Hindi because it is Hindu Shambhalan, but nobody is speaking Hindi. But although I born in Calcutta, but I living in the USA, but I will talk in Hindi little bit. सबको जो यहाँ पधारे हुए हैं महामान्य गुणीजनों सबको चरण वंदन करते हैं और जो आप हिंदू धर्म को प्रति इतना प्रेम और श्रद्धा रखते हैं सभी को हम हमारा भारत शास्त्र संघ की ओर से हम सबको प्रणाम और श्रद्धा निवेदन करते हैं. भारत शास्त्र 1917 में स्टार्ट हुआ. स्वामी प्रणवानंद जी ने शुरू किया था ईस्ट बंगाल में और तब हजारों हजारों आदमी को धर्मांतरित किया जा रहा था, हजारों हजारों आदमी को. और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए महाराज सन्यासियों को लेकर गांव गांव में घुमा और वहां स्टैब्लिश किया हिंदू मिलन मंदिर, हिंदू यूनिटी सेंटर वहां गांव गांव में प्रतिष्ठा किया. और यंग लोगों को सब धर्म रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, माँ बहन को सम्मान रक्षा के लिए जो वॉलंटियर्स फोर्स तैयार किया, तो वो हिंद रक्षी दल गठन किया था 1917 में. और तब से शुरू हुआ और बाद में मैं तो महात्मा गांधी जी के साथ था और 1916 में हम गांधी जी को पास से चले और भारत संघ में योगदान किया 1916 में. उसके बाद ये संस्था के साथ सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है. सेवा के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकता है. धर्म की तिलक माला और असन बसन में नहीं है, धर्म है. उन्होंने कहा उनका कहना था त्याग संयम सत्य ब्रह्मचर्य के भीतर धर्म है. धर्म तो धृति धातु धर्म धृ धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति हुआ. तो धारण करने वाला जो शक्ति है वो क्या है? उन्होंने बोला त्याग संयम सत्य ब्रह्मचर्य ये पालन करेंगे तो आप ठीक ठीक धार्मिक बन सकेंगे. इसलिए उन्होंने कहा धृतिक क्षमा दमस्ते अंशोच इंद्र निग्रह अधि विद्या सत्यमा क्रोध दर्शकं धर्म लक्षणम. जो मनु संहिता में लिखा है महर्षि मनु ने, जो धर्म खाली आसन बसन से नहीं, मठ मंदिर से नहीं, मगर सेवा करो और ये सत्य का आचरण करो. ये सद्गुणों को अंदर विकास नहीं जब तक करेंगे तो आप धार्मिक गेरुआ पहनने से भी धार्मिक बनेंगे और मठ मंदिर बनाने से भी नहीं बनेंगे. रिसेंटली हमारा महामान्य प्रधानमंत्री जी रिक्वेस्ट किया तो अयोध्या में हम लोग भी एक तो बड़ा जगह लिया है और वहाँ मंदिर बना है, वहाँ जहाँ 5000 लोगों का रोज भोजन दिया जाएगा. तो अभी ऑलरेडी शुरू हो गया, मैं देखने गया था वहाँ. और इस तरह से सारा भारत में संस्था के सेंटर है. और मैं प्रदेश में काम करता हूँ, लंदन में है, अमेरिका, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, मिनेसोटा, मिनियापोलिस और लॉस एंजलिस में है, कनाडा में है, टोरंटो में है. और वेस्ट इंडीज में जो यूपी बिहार से मजदूरों को ले गया था गन्ना के खेत करने के लिए ब्रिटिश लोग ने, तो 100 वर्षों का पहला, तो बुढ़ा लोग तो उनका देहांत हो गया, भाषा भी भूल गया. तो वहां हम लोग स्कूल खुला है, 4 स्कूल वेस्ट इंडीज में है और ब्रिटिश गायना में ब्राजील के ऊपरी भाग में वहाँ स्कूल और कॉलेज खुला है. करीब 4000 विद्यार्थी वहां पर अभी है. और वो जो प्रवासी भारतीय था उनके ही वंशधर सब, वो लोग अभी डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, प्रोफेसर हुआ है. और वो धर्म परिवर्तन के लिए हजारों कई हजार लोग भारत सेवा संघ के साथ जुड़ा है और अपना साधर्म आचरण कर रहे हैं. दिवाली, रामनवमी और सब हिंदू त्योहार, होली सब मानते हैं. इस तरह से धर्म का प्रचार के साथ साथ के धर्मांतरित खुद ही हो रहा है. किसको बोलना नहीं पड़ता आप धर्म परिवर्तन करो, वो खुद ही आ जाता है. वो जानते हैं हमारा हजारों वर्षों का पुराना रीति रिवाज है,
वो हमारा जीवन में उतारना है, जरूरी है। हमारे बाप दादा तो करते थे, तो हमको भी करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो आ जाते हैं। तभी कई हजार, अभी हमारा वेस्ट इंडीज में जो 4 स्कूल है, और ब्रिटिश गयाना में जो कॉलेज है उसमें 4,000 विद्यार्थी है कॉलेज में, और सब टंच हिंदू है। और हवन करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। गांव गांव में ऐसा हुआ, और वहाँ ऐसा प्रतिष्ठा शुरू हुआ। और भारत में भी सब प्रांत में आश्रम का शाखा खोला, और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। और ये हिंदू धर्म के लिए तो ये जो हमारा जितने तो सन्यासी भाई हैं, 3-4 हजार आए, सब सेक्रीफाइस तो किया ही है घर को, देश के लिए, और ये समाज के लिए, धर्मों के लिए भी। एनी टाइम दे कैन सेक्रीफाइस देयर लाइफ, दैट way they are prepared themselves। होते तो ये भारत शास्त्र संघ ऐसा सैनिक है, ऐसा सोल्जर है, जो वो समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम सब भारत शास्त्र संघ का ओर से आप सभी को हमारा प्रणाम और श्रद्धा और निवेदन करते हैं। आपको सब जय हो, हिंदू धर्म में जय हो। फिर एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। धन्यवाद। The second is the worldwide magazine Hinduism Today. In the 1970s, Sadguru Shivaya Subramaniam Swami established Kuai Hindu Monastery, Kuai Adhinam. He is regarded as the single most advocate of Hindu Dharma outside Bharat. The worldwide magazine Hinduism Today was founded by him in 1979. The felicitation reads, the organizing committee of the World Hindu Congress 2023, Bangkok wishes to express profound appreciation for the remarkable contributions made by Hinduism Today since its establishment under the guidance of Sadguru Shivaya Subramaniam Swami, a devoted disciple of Jnana Guru Yoga Swami from Jaffna, Sri Lanka. Hinduism Today's commitment to nurturing Hindu solidarity, fostering unity, and dispelling misconceptions about Hindu Dharma is truly praiseworthy. It has served as a guiding light of knowledge, inspiration, and awakening for Hindus across the globe. The unwavering dedication to nurturing the ongoing spiritual Hindu Renaissance and providing a valuable resource for Hindu leaders and educators is immeasurable. Hinduism Today's pivotal role in preserving and promoting the rich heritage of Hindu Dharma is deeply appreciated. We extend our heartfelt gratitude for your tireless efforts in upholding the essence of Hindu Dharma and sharing its wisdom with the world. I invite Pujya Sadguru Bodhinath Velen Swami, publisher, Hinduism Today, to accept the felicitation. I request Param Pujaniya Sarsanga Chalak ji or Shri Sushil Kumar Shah ji to felicitate Shri Satguru Bodhinatha Velen Swami ji.
Now I request Sadhguru Bodhinatha Velan Swamiji to share his profound thoughts and insights with us. Namaste. Respects to the conference leaders, our VIP guests, and to all the delegates here today. As outlined in the Congress brochure, the World Hindu Congress possesses a distinct mission to unite Hindu leaders from various nations, societies, and cultures, harnessing their collective potential to promote global well-being. This conference serves as a pivotal platform for these leaders to foster connections, exchange ideas, and ignite inspiration in pursuit of a shared greater good. Consequently, the World Hindu Congress serves as a catalyst for advancing the cultural, spiritual, and material progress of humanity. This ambitious vision has already been realized with great success, with congresses held in New Delhi in 2014 and Chicago in 2018. The mission of our magazine, Hinduism Today, harmoniously aligns with the objectives of the World Hindu Congress. The magazine's founder, Sadhguru Savaya Subramanya Swami, 1927 through 2001, eloquently expressed the genesis of his inspiration for launching this publication, stating, "During an extensive 1978 world tour spanning Singapore, Malaysia, Mauritius, Reunion, Africa, Bharat, Nepal, Sri Lanka, Europe, and various other countries, I came to the realization that Hindu Dharma lacked a global voice and a communication network. Hindus in Durban were disconnected from the happenings of their counterparts in Colombo, and those in London had no means of connecting with Hindus in Canada. This realization fueled my determination to establish Hinduism Today magazine as an international network, seamlessly interconnecting all Hindus into one invincible front." A wonderful statement. Soon after this tour, Subramanya Swami founded the magazine on January 5th, 1979. 2023 is the magazine's 44th year of continuous publication. Allow me to share a compelling anecdote that underscores a crucial aspect of our magazine. Several years ago, during a conversation with Mr. Giri, a bookseller hailing from Chennai, the topic of reprinting Hinduism Today magazine in India arose. In the midst of our discussion, Mr. Giri made a thought-provoking remark, likening the idea of producing a Hindu magazine in Hawaii and importing it to Bharat to the act of carrying coal to Newcastle. Indeed, there is an element of truth in this comparison. However, it overlooks a significant point. While it is undeniable that Bharat boasts numerous outstanding Hindu magazines, most of them tend to be affiliated with specific organizations, offering articles that primarily reflect the denomination, philosophy, and guru lineage of those organizations. In stark contrast, the articles featured in our magazine encompass the breadth of our major sects and lineages, seldom focusing on our own traditions or activities. This inclusive editorial approach enables us to produce articles that provide a more comprehensive overview of Hindu Dharma than what is commonly found elsewhere. As it strives to advance all Hindus and all Hindu organizations, Subramanya Swami called it his monk's form of public service. Here are some insights into the magazine's production and distribution process.
We receive article submissions from a diverse range of sources, including professional journalists, swamis, other prominent Hindu leaders, educators, dedicated Hindu practitioners, as well as enthusiastic youth and even older children write for Hinduism Today. High quality photography is typically captured by professional photographers, and the dedicated monks at our Hawaii monastery meticulously compile and edit the material to ensure its final polish. The magazine undergoes its printing process in Wisconsin, after which it is dispatched to a global audience that includes both paid and complimentary subscribers. Our complimentary distribution list includes more than 400 esteemed swamis and over 600 major Hindu institutions. Furthermore, we create digital editions of the magazine, making it viewable on the web or downloadable as a PDF, as well as accessible through a mobile app for convenient viewing on smartphones. So let me just show you a few covers here of recent magazines, so you can see them on the screen there. There's one. Second one. And the third one. A few of the basic policies of the magazine are to show both sides of every story and let the readers make up their minds, to put forward religious leaders of all Hindu sects equally, in acknowledgement of their special and central role in the future of Sanatana Dharma, to bring into the consciousness of Hindus and onlookers the glories of this most ancient religion on the planet, to support tradition and its maturity into contemporary times. Being strictly non-political is another policy. Further, we seek to give a voice to cultural, artistic, and spiritual leaders, as well as to the common woman, man, and youth. Subramanya Swami had this to say about the magazine's future. In the event that the medium of the printed or electronic word becomes unavailable, my monks will continue this effort by whatever means available to them, to be a voice and a network of communications for Hindus of all denominations, for all those who believe in the three great Hindu principles of karma, reincarnation, and all-pervasive divinity, precepts shared by the noble tribal faiths. It is the duty of my monks to continue Hinduism Today's public service mission as a support to Hindu Dharma and the surrounding mosaic of related, interrelated, and loosely related traditions, including select New Age lineages. To be their voice to the world and persist as a global presence, a resource of Dharma into the future of futures. I also charge my monks with bringing forth all the ancient arts and sciences of the Vedas, to promote the Vedas as the #1 Hindu scripture and empower the next generation to come up strong in the richness of their heritage with well-defined metaphysics applicable to modern life, giving them security and faith in their workplace, in the corporate office, factory field, or as a small businessman, entrepreneur, politician, or scientist. These are the ambitious goals I envision for Hinduism today. Thank you very much. And last but not the least, Pujya Mata Amrutanandamayi Devi. Pujya Mata Amrutanandamayi Devi was born on 27th September 1953. कर देते हैं।
Mata Amritananda Mai Devi, born on 27 September 1953, popularly known as Amma, said, "People used to come and tell me their troubles. They would cry, and I would wipe their tears. When they fell weeping into my lap, I used to hug them." She truly became Amma for the suffering humanity. The felicitation reads, "The organizing committee of the World Hindu Congress 2023, Bangkok, is honored to express deep appreciation to Mata Amritanandamayi Devi for her extraordinary and exemplary contributions to Hindu Dharma. Her remarkable selfless service to the betterment of humanity, focusing on education and the well-being of humanity, has left an indelible mark on the world. Her tireless efforts in promoting spiritual values, compassion, and the ethos of Hindu Dharma have illuminated countless lives and inspired people across the globe. This momentous occasion will serve as a testament to her unparalleled contributions and as an inspiration to all, highlighting the profound impact that one individual can make on the world through their dedication, compassion, and unwavering commitment to the principles of Hindu Dharma. I request Amma Mata Amritanand Mai ji to inspire and guide us with her wise and blessed words. Amma. ബ്രഹ്മസ്വരൂപനും ആത്മസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും അവിടെയുള്ള ഓരോ അണുവിലും അലഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള അതിശക്തമായൊരു സ്പന്ദനമുണ്ട്. അത് വേദമന്ത്രങ്ങളുടെയും എണ്ണമറ്റ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെയും തപസ്സിന്റെ ശക്തിയാണ്. അത് ഇതിനെടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പരലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങള് നമ്മളെ മക്കളെല്ലാം തളർത്തായിക്കട്ടെ. ആധ്യാത്മ അറിവും ശാന്തിയും ശക്തിയും എവിടെയും എല്ലാവർക്കും തുണയായിരിക്കട്ടെ. അതിന് ഈ പ്രേമമാകുന്ന ഭാരതമാകുന്ന മണ്ണ് സ്നേഹമായ മണ്ണിൽ ഉറച്ചു, ഭാരതമായ സംസ്കാരം സ്നേഹമായ മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കട്ടെ. സൽക്കർമ്മങ്ങളാട്ടെ അതിന്റെ ഇലകള്, അനുകമ്പാപൂർണമായ വാക്കുകളാട്ടെ അതിന്റെ പുഷ്പങ്ങള്, ശാന്തിയാകട്ടെ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ. അതിലെ സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നായി ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബമായി ഈ ലോകം വളർന്നു വികസിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ശാന്തിയും സമാധാനവും കളിയാടുന്ന ഒരു ലോകത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സായത്തമാക്കുകയും ചെയ്യാൻ കൃപ നമ്മളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ മൊത്തം പറയുന്നു. Allah goes down to all her children who are the embodiments of supreme love and supreme consciousness. A very powerful vibration pervades every particle of sand, every atom, and the very atmosphere of our country, Bharat. It is the vibration of Vedic chants and spiritual austerity performed by countless ancient rishis. It is the pulsation of spiritual power.
This is the invaluable speciality of Sanatana Dharma. May my children have the strength to overcome all the obstacles that they have to face in their way towards establishing the goals. May the obstacles of the outer world never deter you. May spiritual knowledge and power help you at all times and in all circumstances. May the tree of our lives be rooted in the soil of love. May good deeds be the leaves, kind words be the flowers, and peace be the fruits. May the world flourish as one family, united in love. May we thus be able to create a world in which peace and contentment prevail. This is Amma's prayer to the Paramatma. Om Amriteshwariyai Namaha. അമ്മ വേറെ ദിവസം ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല അതിനിപ്പം ഇന്നും പറ്റാതെ കിടക്കുന്നു Amma was adding that everything in creation is governed by dharma. Bharat is the land that has taught the world the ultimate truth that God is not a remote abstract concept, but truly exists within us as our very own breath, our hearing, our sight, touch, taste, thoughts, emotions, our very pulse and circulation. May that abundant source of spiritual wisdom, which has not yet run dry, emerge and surge powerfully like the river Ganga, once again spreading across the land and purifying the earth. May we all take a pledge to make it so. May divine grace bless you all. Amma was adding that she will be addressing all her children day after tomorrow in the morning session. So we'll be able to hear Amma's full address during that time. Abhar Amma. Dear delegates, we have received a special message from His Excellency Mr. Shri Sretha Thavisinji, Prime Minister of Kingdom of Thailand, and I am reading out his message. It is with great pleasure and a deep sense of gratitude that I extend my warmest greeting and best wishes to all of you on the occasion of the forthcoming World Hindu Congress 2023 to be held in the beautiful city of Bangkok, Thailand from 24th to 26th November. Thailand is honored to host this prestigious event which brings together individuals from across the globe bound by the principles and values of Hindu Dharma. This gathering provides us with a unique opportunity to celebrate our shared dharmic heritage, which transcends geographically borders and connect us in a profound and enduring way. The principles of truth, righteousness, and ethical living central to Hindu Dharma resonate with the values of tolerance, harmony, and respect that Thailand holds dear. The World Hindu Congress 2023 will surely contribute to fostering global unity, mutual understanding, and cooperation, which are essential in these times of rapid change and evolving challenges. This Congress is an opportunity to engage in meaningful dialogue, exchange knowledge, and work collaboratively to address the challenges of our modern world while upholding the timeless wisdom of our common dharmic heritage. May the World Hindu Congress 2023 in Bangkok be a resounding success, inspiring us all to carry forward the eternal value of Hindu Dharma for a brighter and more harmonious future. Signed by
Shri Shetha Thavisinji, Prime Minister of the Kingdom of Thailand. Now I call upon the stage Swami Shri Vijnanananda ji. Namaste once again. For delegates' information, at 2014 inaugural World Hindu Congress, at this platform, we recognize Param Pavan Dalai Lama ji and Swami Dayananda Saraswati for his outstanding contribution for Hindu thought. In 2018 World Hindu Congress Chicago, we recognize 4 organizations for their outstanding contribution for Hindu society. First was Gita Press Gorakhpur. International Society for Krishna Consciousness. Chinmay Mission. बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था स्वामीनारायण. And now at this World Hindu Congress 2023, you have witnessed the 2 organization and 1 great personality recognition here. Namaste. धन्यवाद स्वामी जी. The journey of Rashtriya Swayamsevak Sangh commenced in 1925 with humble origins. Now, after 98 years, it has evolved into a strong banyan tree, safeguarding and protecting Hindus under its vast umbrella. The RSS stands as the driving force behind the global Hindu resurgence movement, evident in Bharat and across the globe. This gathering of nearly 2,000 Hindu delegates from around 61 countries today is a testament to their sadhana. Dr. Mohan Bhagwat ji, the Param Pujniya Sarsang Chalak of Rashtriya Swayamsevak Sangh, dedicated his life and became a full-time pracharak of RSS in 1974. He shouldered several responsibilities as a pracharak. And in year 2000, he assumed the responsibility of Sar Karyavaha, means General Secretary. Since 2009, he is heading as the Sar Sangh Chalak, leading this largest Hindu organization. We are privileged to have him among us today. It is an honor to request Dr. Mohan Bhagwat, Param Pujniya Sarsang Chalak ji, to deliver his inaugural Margdarshan to all of us. परम श्रद्धेय संत चरण on the dais as well as in the audience. Dignitaries on the dais, my Hindu brothers and sisters. This 3rd World Hindu Conference has declared Jayasya Ayatanam Dharmaha as its theme. And all the blessings we have received, including His Excellency's message, they have, in a way, enlightened about this very theme. So my job is now to summarize what has been said already, and then because I have been given some time, I have to pass that time
to elaborate on the summary. Ayatanam is abode. Ayatanam is also expansion, growth. Ayatanam is also Adhar, the mainstay. And Ayatanam is also stand on which particular material or anything stands. In all those four ways, this word has been used in our Sanskrit literature. And they all describe what is meant by Jaya. The translation, dictionary, through dictionary, it says Jaya is victory. But then what is victory? The standpoint of Sanatan traditions, Hindus, it is a very special standpoint about Jaya. Jaya is not about victory and the victims, not about conquering and the conquered. Jaya is about joining everybody together. There are three kinds of Vijaya. First is Rakshasa Vijaya, the victory as seen by the demons. In this, there is destruction only and nothing else. The Tamasa Prakriti Vijaya, it destroys everything. What for? For nothing. Just for the sake of destroying. That Asuri joy, for satisfaction of that Asuri joy. When we say Jaya or Vijaya, we don't refer to this. This is not allowed in our tradition. Spreading our dominion all over the world above everything, that is not our goal. Vasudhaiva Kutumbakam and Krunvanto Vishwamaryam, those are our goals. World is one family, and we will make everybody Arya, that is cultured. That word also is inadequate, but for the want of better word, I must say cultured. Then there is second, Dhana Vijaya. To acquire possession of all means of material happiness, people try to fight and dominate each other. I have experienced this. This is a Rajas type of Vijaya. Sometimes it may bring about good, but intention is not good. Intention is self-centered. We have experienced all these two kinds. We have experienced the Asura Vijay. Others, they committed aggression on our society and they have for 500 years wreaked destruction and havoc in our country. And we have also unfortunately taken the taste of this Dhana Vijaya, wherein for about 150, 200 years, India was looted like anything.
But when we say Jaya or Vijaya, it is always Dharma Vijaya. The Vijaya that stands on Dharma. The process that is carried out by the Dharma Niyams, Dharma rules. And the result is also Dharma. That is Dharma Vijaya. Sometimes, even those who don't want to fight have to fight. Satya, Ahimsa, these are the two basic tenets of our tradition. But even those who want to practice Ahimsa or to save the practice of Ahimsa in the world, to save it, we have to involve ourselves in fights. So, in the regular stream of things, we have to be ready for fight. But fight for what? For Dharma. Dharma has also been elaborated upon. Dharma, Dharanat Dharma Ityahu. Dharma joins everybody, upholds everybody, bringing together, keeping together, and bringing about progress together. That is the function of Dharma. Dharanat Dharma Ityahu, Dharmo Dharayate Praja. All that has taken birth or is created, Dharma sustains it. Dharma is sustenance. Dharma is also balance. Madhyama Marga, Tathagata said. It avoids all extremes. It accepts everything and everyone. Because Dharma knows that not only unity in diversity, but all diversities, they spring from the unity. Existence is one. And therefore, there is no us and them. Whatever is there is my own, not my possession, my relation. So I have to try, I have to strive to bring everybody together and to bring about progress. That is the Dharma Vijaya which is expected in this theme, Jayasya. Because this Jaya, which is Dharma Vijaya, it stands on Dharma, it brings about Dharma. So, what is this Dharma? Okay, it brings about balance, it is sustenance, it is based on truth of existence, unity of existence. But what is it actually? What we have to do? All our traditions, Hindu traditions, they have started from this single point, truth. Everything is one. All are one. No, all is one. And then there are different darshanas. Some say there is God, some say there is no God, some say there is Atma, no Atma. All these intellectual differences are there. And there are so many streams. Going crossways also, going opposite also. But then all of them, they come together to a single conclusion, how to behave. That is Dashalakshanaatmak, one way of describing it, or Yamanyamatmak,
सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य शौच तप स्वाध्याय संतोष ईश्वर प्रणिधान और सत्य प्रणिधान. This is common to every Bharatiya tradition. Even those in Bharatiya tradition who do not accept Ishvara, who do not say Atma continues or Atma is Shashvat, immortal, they do not accept that, but they accept this. Unity, diversities of unity and Yamaniyamaatmaka Acharan. And therefore, Tathagata is described. Sabba papas akaranam. Stay away from all papa, evil deeds. Kusalassa upasampada. Carry on with your life without disturbing anyone else's. That is kushalata. Yoga karmasu kaushalam. That kaushalam also is the same kaushalam. And then satchitta pariyodapanam. Doing this, you have to purify yourself, your heart. All sampradayas in Bharatiya traditions, they lead to one thing. They purify you. That chitta shuddhi, that is brought about. Etad buddha anusasana. This is the anushasana of Buddha. This is the discipline of Buddha. All disciplines, they say the same thing. Plural. I think verse number 35, it describes Alukar ava vekuli inner soul nalugum, that is hatred, lust, anger, and foul speech. These four. Elukka aram. Elukka under the aram. This, anything without these four is called dharma. That is what they say. So, we have selected this as our theme of this third conference. What we have to do, if ayatanam is expansion or growth, we have to reach out. There are so many Hindus which we have not yet touched. Ours will not be a movement or an agitation or a group which is very powerful among the Hindu society. Ours will be group which will expand and organize whole of the Hindu society. We have to go everywhere, touch everybody. He may agree on some things, he may not agree on some things. But we have to connect everybody to this pravaha, this stream. Because we have a duty to execute. Today's world is now stumbling. For 2000 years, they have performed so many experiments to bring about happiness, bliss and peace. They have tried materialism, they have tried communism, they have tried capitalism, they have tried with various religions. But they have achieved material prosperity. But there is no satisfaction, no santosha, no samadhana. So many things we have progressed in our knowledge, material knowledge. But also
we have become more violent. All these things are happening. So much development and so much deterioration of the environment. All this. So there is no bliss and peace. And now, especially after Corona period, they have started rethinking, and it seems they are unanimous in thinking that Bharat will provide the way. Because Bharat has that tradition, Bharat has done this before. We have proved this on and on. And therefore, they expect from us. And now, very birth of our society and our nation is for the same purpose. Once upon a time, when everybody ran after happiness, that happens all the time. We live for happiness. So we sought happiness outside. Everybody in the world. And when it was found that, yes, material happiness is there, it is real, but it is incomplete. There was a stream, people in which said that, okay, if it is incomplete, life is incomplete. There is no completeness in anything in the world. So let us stop here, don't search, go in this direction only, find more and more happiness outside. But people in our country, they did not stop. They said, okay, it is not found in, the happiness is not to be found in outside. We will search it inside. And they went on searching, and one day they got the truth. That everything that appears many and diverse arises out of a single unity. And that unity is permanent, and at all levels it is real. So, this unity, if we get to it, if we can realize it, if we can experience it, then we get satisfaction. Hankering after happiness stops, because now we have everything we want. There is nothing we want. So when this was realized in our country, our rishis, our munis, they thought that means if everything is one, that means everybody is our relative, my own. In his happiness, I find my happiness. So if I have got this very important truth, by realizing which I stop hankering after material happiness, and I feel that I have got everything now. So I have to impart this knowledge to everybody. So there was a gigantic effort went on for how many centuries, don't know. This is before history opened its eyes. This has happened. It has been recorded in our Veda. Om Bhadramichhanta Rushya Swarvidaha Tapo Diksham Upase Duragre Tato Rashtram Balam Ojasya Jatam. The benevolent rishis, for the benefit of the world, they undertook a hard penance, and through that our nation was born. And that is why before anybody, Hindus went to nooks and corners of the world. Pre-Christian, pre-Islamic traditions, if we study them, prevalent all over the world, they have the same Sanatan principles, their worldview, their view of life.
their ideas about individual conduct, they are all the same. And now they are persecuted a lot in the world. But they find solace in Bharat when they come here regularly. Once in 4 years. They also have their conference. And they say, we find peace only when we come to Bharat. There is some connect that we have forgotten, but that connect is there. We realize it. And now everybody is saying that. Some months back, the World Muslim Council's Secretary General, he came to Bharat. And in his speeches there, he said that if we want harmony in the world, Bharat is a must. So this is our duty. This is why Hindu society came into existence. All the Sanatan traditions, they do this very thing. Their worships may be different. Their disciplines may be different. Their darshan of philosophy may be different. But starting point is the one and goal is the same. So this is our duty now. And for that, we have to reach out, connect everybody. First stage, connect every Hindu. And Hindus together then will connect with everybody in the world. As Hindus are connected in more and more numbers, the process of connecting with the world society has also started. We can see that Hindus have started playing role for Vasudhaiva Kutumbakam. So connect with all Hindus, and Hindus' God-given task is Vasudhaiva Kutumbakam Krunvanto Vishwamaryam. For the fulfillment of that, we have to come together, stay together, work together. And so many people from different backgrounds, from different disciplines, when they come together, they have to learn to work together separately. This I repeat. I have said it in Chicago. Everybody will not fall in a particular uniform. We have to learn that art. Everybody has to have some contribution in the world. That is why they are there. Nothing is without purpose in this world. So everything is with purpose. We must have the knack to identify. And then we must take everybody together. Direction will be the same. Pricing will be the same. We will march with the same steps. But there will also be a distance. In large formations, everybody walks together separately. About 20-50 people, they can march together without any distance. Hands in hands, they can go. But if 1,000 people, they have to march through roads. They have to have the formation. And in every formation, there are units and there is distance between units. Walking together is not merging together. Our ancestors have recognized this. That is why we accept and respect every diversity.
even those who tried to subjugate us with their Asur Vijay or Dhana Vijay, we also recognize their specificity. We have respect for everybody because our ancestors, they have recognized this. We had forgotten this knack, and that is why we were broken into pieces, and then we were conquered. We have to come together now, walk together now. And then again, to do so, we have to remember the Kural, same Kural. Anger, hatred, lust, and foul and hurtful speech. And add to envy and ego. These prevent coming together of individuals. These break the society. These break the organizations. So when we work, we have to go and contact everybody, connect with him, bring him to us by our service. We have that spirit. And I dare say, we have an edge over all the world in the matter of service. Selfless service. We do it. It is in our tradition. It is in our blood. So, reach out, conquer nothing but hearts. Serving and give and take. Not materials, not monies, not ammunitions. We have to give and take qualities. We have to learn from everybody. And we should also be able to teach by our example. Leading by example. Leading from within. So we have to have those qualities. There is a long list of qualities in Bhagavad Gita, 16th chapter. Daivi Guna Sampat, we call it. Abhayam, Sattva Samshuddhi, Jnana Yoga Vyavasthiti, Danam, Damascha, Adhyaya, Tapa Arjavam, Ahimsa, Satya. And there is long list. We have to achieve all those qualities. We should be exemplary. Our example should be followed. And certain things, because we stopped walking 1,000 years before, 2,000 years before, We have lagged behind. So there is much to be learned from the modern world also. That also we should. and avoiding all the pitfalls mentioned in that Kurals, we should go on working. The Dharma view of the Hindus will create global Dharma view. Those in the world who want this world together, who want to uplift everybody together, they are dharmics. This Hindu Dharma view of Hindus will lead to global Dharma view. And then long awaited Dharma Vijay, that will materialize. World is waiting for that. With their breath abated, they are seeing how India is progressing. Comments are coming from all four directions. They are looking with hope. We have to fulfill it. And so, we should continue with this when we come to conference, deliberate on many things, have certain plans. We have to work to materialize those goals. Should be
decided in this conference, and they should be fulfilled before next conference. And we should go ahead, step by step, we should go ahead. Should never stop. Our number must grow. We should reach everybody. Then we will have the Dharma victory, Dharma Vijay. That Vijay will not be against anybody, but that Vijay will be for everybody. Even those who get conquered, they will not know that they are being conquered, because there is no conquering. It is joining and emancipating. The real enemies of the world are the vikars. Kama, Krodha, Mada, Moha, Lobha, Matsara. And Ajnanam. ignorance. We have to start from material world and take everybody to this spiritual level. That is our task, our national task. That is why Bharat is rising. Bharat is rising for Sanatan Dharma. When we do this, then Durmada Durdhara Ripunashaya Nishchita Samuchita Rana Vijayaya Bahujana Hitaya Bahujana Sukhaya Samartha Purvajanam Samabhyarthita Jayamangaladayini Bhavani Bharata Bhuvasini. She will be awakened, and then everybody and everything will be Sumangalam. That Sumangalam should happen, and I wish you all the best. That Sumangalam should happen In your this life, with this best wish for everybody, I thank you for hearing me and stop my. Thank you. आभार परम पूजनीय श्री संघ चालक जी. Dear delegates, as you know that our concurrent conferences, 7 conferences will start from 2 p.m. immediately after the lunch. I would like to share some information about the same. World Hindu Economic Congress will take place here in this hall, which is called as Chhatrapati Shivaji Maharaj Hall. It's also known as Royal Jubilee Hall. Hindu Educational Congress will take place at Maharishi Dayanand Saraswati Hall in Sapphire 205. Hindu Media Conference will take place in Lokmanya Bal Gangadhar Tilak Hall, which is Jupiter 4 and 5. World Hindu Political Conference will take place in Sri Armuga Navlar Hall, which is in Jupiter 8 and 9. Hindu Women Conference will take place in Rajmata Jijabai Hall, which is in Sapphire 204. Hindu Youth Conference is organized at Dharamveer Hakikat Rai Hall, which is Jupiter 12 and 13. And Hindu Organizations Conference will take place at Swami Chinmayanand Saraswati Hall, which is Sapphire 206. I request you all to download Zoho Backstage for Attendees app. Once you download this app, then select WSC 2023 event. By downloading this app, you will be able to get all the information, and at the same time will be able to network with fellow delegates. So please download the app. I now invite Shri Raju Bachumal Manwani ji, the Secretary of the Organizing Committee, World Hindu Congress 2023 Bangkok, for the vote of thanks. Born in Bharat, he moved to Thailand 35 years ago. He is a former director of Bharat Thai Chamber of Commerce, the past president of the Lions Club of Bangkok, Shillong. Additionally, he served as the managing director of Imago Industry Group of Companies, an eloquent speaker and trainer
Formerly a media and event organizer, he currently works as a consultant for business meetings and destination events. Please join me in welcoming him to the stage for the vote of thanks. Namaste. With the blessings of all present, I'd like to propose a vote of thanks. Over the years, Hindu Dharma has had many moments and that raised awareness and broke many shackles. It took many of our gurus to impart the knowledge that our Asian culture gives us. What we see happening now at this time is something absolutely different. It is arising from the ground up with roots firmly implanted Among the populace. And it is all over the country, and I would even say the entire world. is beginning to see the intrinsic qualities that define a Hindu. A lesson, I would say, at the right time for a fractured world. And this is not going away. Having said that, I must reiterate what Amma said yesterday. In her analogy, she said that what our gurus and our saints can give us is the diyas. It is for us to put the oil in that and make sure that the light burns eternally. What an extraordinary morning and a great harbinger of what awaits us over the next few days. Ladies and gentlemen, our Dharma allows our mind to be led by ever-widening thought and action, which espouses generations of new thoughts to add up to our ancient knowledge. Today, as I breathe the same air that so many of us saints and swamis here and philosophers are thinking, I would like to add what Param Pujya Shri Bhagwatji said. It is not all are one, it is all is one. We are one, indeed we are just one. I marvel at the opportunity we get to be in your company, an opportunity to imbibe much more information and knowledge and take back and spread it all over. Swami Purnamanand Maharaj, sorry, I'll take it good again. Purnatmanand Maharaj Ji, the work that the Bharat Seva Shram Sangh puts in is exemplary, especially the social and the humanitarian work that it goes on in the areas that not many have an opportunity to get into. Over 100 years, and we wish you 1,000 more years too. Sadguru Bodhinatha Velan Swami, your teachings to a world which harbors doubts on the wisdom of the Hindu Dharma, and that this is the only answer to the mayhem that prevails the world over. You bring peace and solace through your teachings and your magazines, the Hinduism Today. We are very proud of you. Mata Amritanand Mai Devi Ji, Amma, our mother in many languages, a mother truly to millions. It was a pleasure meeting you and being blessed with a hug. I realized what scores of your followers were blessed with and what I was till today missing. We are glad that you chose Bangkok as your first visit outside Bharat ever since the lockdowns. We are blessed and fortunate to have you with us. Your prayer of one world will indeed be realized very soon. Param Pujya Satsang Chalak Dr. Mohan Bhagwat Ji, the dedication with which Sangh Parivar works towards the betterment of all Bharatvasis is indeed inspiring. You inspire so many, and I was one such beneficiary. On a personal note, I want to say this. Last year, I was at a crossroad, and meeting you helped me
choose the right path. And since then, I'm very happy with that meeting last year. Thank you very much. You have indeed touched many lives and many not known to you too. Your detailed description of the theme of the WSC 223 Congress opened new eyes, new doors. It was indeed very enlightening to hear all that. Shri Milan Parande ji, thank you for all the introductions. It's always been a pleasure interacting with you. I'd like to add, Shri Sushil Saraf ji, your commitment to the Hindu Dharma is astounding to say the least. May you continue to inspire this and the next generations. Thank you very much. Swami Vigyananand ji, you are truly an inspiration. The work that you have started here, we hope that we all join you together and we have many more such congress all over the world. Who would have thought that Rabindranath Tagore's dream of our country awakening into a heaven of freedom would take so long? But it is on us now, and we will nourish it, and Hindu Dharma will show the light to the world. If there is any doubt, I'd like to draw your attention to the theme of the WHC 23. Jayasya Ayatanam Dharmaha. Dharma, the abode of victory. Namaste. Dhanyavad. Thank you, Raju ji. Dear delegates, I have an important announcement to make. The World Hindu Congress has organized a poster presentation, and all the poster presentations are displayed in the Jupiter foyer. I request you to please visit the area, view the poster, and interact with the presenters to learn more about it. The lunch will start by 12:30. Till then, we request you to go and see the poster presentations, network with everyone, and at the same time, check where you want to attend the next conference. Check the place. 3 of the halls are located near the Annapurna Hall where you guys will be having the lunch. So just get familiarized with the venue and the respective halls, and please be there by 2 p.m. in your conference. I kindly urge you all to refrain from leaving your bags unattended. Since all of you have similar delegate bags, we request you to please place a business card or identification inside your bag. This way you can easily identify and ensure that you don't accidentally pick up someone else's bag during collection. Thank you for your cooperation. With this, we have come to the end of the inaugural session. Enjoy your lunch and get ready for the parallel concurrent conference, which will start sharp at 2 p.m. Signages will direct you to the respective halls. Thank you. Dhanyavad. In the new world order, where do we see Bharat and Hindu? Because jihadis have their Al Jazeera and the leftists and conversion gangs have their own ecosystem of BBC, CNN and many more. You may be having many news sources, but what we are focused on is News with an opinion, or simply put, news with strong views. Today, wars are fought not just with weapons, but also through the dissemination of information. We'll talk about Israel-Hamas, Russia and Ukraine war. But what we don't talk about is the information warfare that is taking place right now as we are watching this video. It is a fact that those who fight with weapons have to fight a war of narrative while simultaneously being engaged in conventional warfare. Today, people are in a state of dilemma regarding the role of media in the process of nation building. Frankly speaking, people are unaware of the power of media. With propaganda-driven channels, communist-minded media moguls, and a monopoly of a few organizations, one is left with no option but to believe in all the information that is fed to them by the channels. These pseudo-secular criminals have normalized presentation of one-sided stories. These news channels with an anti-Hindu narrative and ideology of a divided Bharat, to a large extent have been successful. 20 years ago, the same situation prevailed in Bharat.
The news industry was plagued by the monopoly of the so-called intellectuals. All news in India was one-sided. The masses were purposely deprived of the other side of the news. The other side, which was the real news. During those tough times, Sudarshan News came to the rescue by being an alternative source of information for the people of India. And we weren't just an alternative, but the strongest alternative. Sandesham. Sudarshan News. You are from Sudarshan News. Sudarshan News तो अपने चैनल में आपका एक संदेश. Any language. Any language. संदेश. ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപല്ല ഒരു ശൃംഖലയുടെ കണ്ണിയാണ്. അവർ മാറി നമ്മൾ മാറാൻ നടക്കില്ല. അവർ മാറില്ല നമ്മൾ മാറിയാൽ മറ്റും ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് एक जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हम हमेशा ये अपेक्षा करते हैं कि दुनिया बदल जाए फिर हम बदलेंगे. मैं कहती है कि हमें जब बदलाव होगा तभी दुनिया में भी बदलाव होगा. इसलिए हम पहले अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करें. अपने आप सूर्य को जैसे मोमबत्ती के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, ईश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो हम दूसरों के लिए करते हैं निस्वार्थ भाव से, इससे हमारा विकास भी होता है, दुनिया का विकास भी होता है. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी धन्यवाद. तो इन्होंने हमें संक्षेप में समझाया कि अम्मा जी ने क्या कहा. एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए संदेश छोटा सा जो अम्मा जी की संक्षेप में बताएं. अम्मा बता रही थी कि ये जो प्रयास हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ एक सभी एकजुट हुए हैं लोग और यहाँ इस कांग्रेस में भाग ले रहे हैं. इसलिए ये भाव हम में होना आवश्यक है कि एक ज्ञान होना हमें आवश्यक है कि हम एकाकी द्वीप नहीं है, एक जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसलिए जो हम करते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है. हम हमेशा अपेक्षा करते हैं कि दुनिया बदले फिर हम बदलेंगे, लेकिन जब तक हम नहीं बदलते दुनिया नहीं बदलेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. हम फिर आपसे समय चाहेंगे, फिर आएंगे और जरूर आपसे अम्मा के बारे में, अम्मा का जो मैसेज था वो आपने सुना, किस तरीके से वो कह रहे हैं हम एकाकी द्वीप के. मोहन भागवत जी इस वक्त वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आ रहे हैं. एक छोटा सा संदेश उनका हम ले लेंगे, एक छोटा सा संदेश उनका ले लेंगे. एक नमस्कार जी, आपका एक रिएक्शन हिंदी में अगर आप दे सकें तो दे सके हिंदी में एक संदेश मोहन जी. तो आप यहाँ तो आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर जो अतिथिगण हैं वो यहाँ मौजूद हैं और रिएक्शंस आप देख सकते हैं सभी के. यहाँ पर बात करते हुए अभी कुछ ही पल पहले यहाँ पर अम्मा आई थी और अब मोहन भागवत जी आप उनको देख रहे हैं. और उनका संबोधन जो था वो अंग्रेजी में रहा और अब बिजी शेड्यूल होने के चलते यहाँ पर वो जो है समय इस वक्त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मोहन भागवत जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं. संबोधन इनॉग्रल सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, वो संपूर्ण हो चुका है और अब बाहर निकलते हुए मोहन भागवत जी. तो आपने अभी देखा मोहन भागवत जी थे, अम्मा थी. अम्मा जी का जो मैसेज था वो आपने देखा, उन्होंने किस तरीके से कहा और तमाम लोग यहाँ पर हैं. तो आपसे भी अगर हम जान पाएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं इस ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 बैंकॉक करीब 2000 डेलीगेट्स आए हैं इसके अंदर और बड़े बड़े डिग्निटरीज हैं. 7 कॉन्फ्रेंसेस का एक कॉन्ग्रेस है. वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड हिंदू मीडिया कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड हिंदू यूथ कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड हिंदू वुमेन कॉन्फ्रेंस और एक होता है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड टेम्पल एसोसिएशन का. तो इस प्रकार का पहला जो कॉन्फ्रेंस था वो 2014 में दिल्ली में हुआ और 2018 में शिकागो में हुआ और ये तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 बैंकॉक में हो रहा है. तो ये सारे वर्ल्ड के हिंदुओं को हर सेक्टर में एक करने का एक प्रयास है और जब हिंदू एक होगा तो विश्व का कल्याण होगा और हिंदू फिर सब लोगों को एक करेगा. क्या लाभ पूरे समाज को, हिंदू समाज को और जगत को इससे होने वाला है कि हिंदू खाली अपनी बात नहीं करते, वो जगत की बात भी करते हैं? आजकल जो दुनिया में हम देख रहे हैं कि अनेक देश
ऐसे स्तर पर खड़े हो गए हैं कि आपस में लड़ रहे हैं और हिंसा बढ़ती जा रही है। कहीं मानव सुख की कामना करता है परंतु सुख मिल नहीं रहा है। तो आज पूरा संसार भारत की ओर देख रहा है और भारत, उनको लगता है कि भारत के पास इसका एक समाधान है। और भारत के पास समाधान इसलिए है कि वहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोग बहुतायत में हैं। सनातन धर्म ही इसका समाधान दे सकता है, विश्व शांति का समाधान दे सकता है, सुख का समाधान दे सकता है, विश्व के कल्याण का समाधान दे सकता है। इसीलिए जयसे आयतनम धर्म इस विषय को लेकर के ये हमारी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 हो रही है और इसके माध्यम से हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना को और पूरे विश्व के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। पूरा विश्व एक हो, वी ऑल आर वन, ये बात नहीं है वी ऑल इज़ वन, ये बात अभी माननीय सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत ने सबको बताई है। तो हम सबको एक साथ लेकर के चलना, एक साथ रहना और एक साथ प्रगति करना सिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद गोयल जी। आपने जिस तरीके से आनंद गोयल जी ने पूरा समझाया कि क्या लक्ष्य है, क्या हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं, और वो तमाम लोग जो हिंदू समाज की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। आपसे विवेक तिवारी जी, आपसे अगर मैं पूछूं आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है और क्या लाभ हिंदू धर्म को तो होने ही वाला है, और जो चीज़ें, जो परेशानियाँ हैं, क्या उनका समाधान भी यहाँ पर ज़रूर कर लिया जाएगा, उनकी भी अगर चर्चा की जाए। हाँ ज़रूर, आइए। हाँ, बहुत से मेहमान यहाँ पर हैं और सभी से हम कोशिश करेंगे, सभी से उनकी जो बात है वो रखी जाए, उनसे उनकी राय जो है वो ली जाए। हाँ, ये आप लाइव हैं इस वक्त, आप लाइव हैं, आप कुछ अपनी बात कहना चाहें तो पहले आप वो कह लीजिए। देखिए, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, सवाल ये है वर्ष 2014 से कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब इस तरह के वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 जैसे इवेंट विश्व भर में सनातन धर्म संस्कृति के हम संवाद हिंदू करने लगेंगे, और जब सारे सृष्टि के लोग यह देखेंगे कि हिंदू धर्म की मान्यता इस तरह की है, इनकी परंपरा ऐसी है, तो यह अपने आप साबित हो जाएगा कि भारत ही विश्व गुरु है, जिसने वर्षों से, युगों युगों से इस पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। आज पूरे विश्व के धर्म के लोग, जैसे आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा कि पूरे विश्व के लोग कोरोना पैंडेमिक के बाद भारत की तरफ देख रहे हैं और वह यह आज भी चाहते हैं कि भारत पुनः उनका इस विकट परिस्थिति में मार्गदर्शन करे। आज रशिया है, इजराइल है, इतने बड़े बड़े जो वॉर इस विश्व में हो रहे हैं, इसको शांति का संवाद भारत ही बनेगा। नरेंद्र मोदी जी इसमें हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इससे हमारा मार्गदर्शन करेगा। इस पूरे कार्यक्रम से लाभ होगा, और मार्गदर्शन की बात आपने करी, नरेंद्र मोदी जी का जिक्र यहाँ पर किया, और किस तरीके से उत्थान की बात आपने कही, और भी काफ़ी लोग हैं। आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, फिर हम वापस आपके पास आएंगे। और आप देखिए, देश विदेश हर जगह से जो साधु संत समाज है, इफ़ आई कैन हैव फ्यू मोमेंट्स, गुरुजी, थैंक यू सो मच, if I can have a few words from you about the relevance of this World Hindu Congress 2023 and how it is going to benefit the Hindu society, and not just Hindus but the entire globe, because Hindus, they also think about the benefit of humanity at large. Yes. Well, I think the idea is that to spread the idea of oneness, as the speaker said with the RSS, that we're trying to start with a oneness among Hindus, seeing humanity as one, Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world as one family. To see that, and then to spread that message out as an eternal message that comes from Bharat. It's an ancient, thousands of years old message that is very relevant to the world today. And the more we can see a oneness, the less friction there is in the world, and that's something we all want. Your message to the youth, because most of the people, they pick up the dharmic path when they are above the age of 50 or 60, and then they decide. But do you think many people, they say that's the wrong age, you should start early? Well, of course you should start early, and the question is, who should start you? And that's the parents. So we can't delegate that to someone else. You can, what I like to say is, you can
send your children to a dance teacher, send your children to a music teacher, but when it comes to Hinduism, you have to be the teachers. So the mother and father really need to take that responsibility seriously to instill Hinduism in preteen and teenage years, and then hopefully it will stick when they get older in their 20s and all. But we have to look at the parents as responsible. Definitely, it's not just the responsibility of the child alone that he picks up the dharmic path, because then there will be more difficulties. A message for entire Hindu community from your side, and from today's perspective, which suits them and would benefit them at large. Well, I think there's a need to work together, and that's always a challenge. All the different Hindu groups need to work more together to create a sense of unity, and conferences like this are helping to achieve that. So it's not something that happens overnight. It's a slow process, but I think, as was said in this initial session, is growing. It has momentum, and so we just need to nurture that momentum and encourage the idea of unity and peace within to spread as an ancient message from Bharat Hinduism. Thank you so much, Sadhguruji. The message was quite clear that you have to be united, and it should start from the parents and not just from the children. You can't blame alone the children. The parents have to instill the values, the ethics and everything. Thank you so much, Sadhguruji. So, as you can see, सभी लोग यहाँ पर व्यस्त हैं. मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ की भी बात करेंगे और सुदर्शन वर्ल्ड की भी जो है उसकी भी चर्चा हम करेंगे. बहुत लोग हैं और बहुत सी बातें हैं. आपका क्या उद्देश्य है? मैं रविंद्र जैन, वैसे मैं इंदौर से हूँ, लेकिन मैं अभी म्यांमार बर्मा में रहता हूँ. तो हिंदुओं के समाज म्यांमार में दुनिया के सबसे ज़्यादा नंबर 2 पे हिंदू रहते हैं, लगभग 2 मिलियन. तो अभी हम लोग वहाँ समाज के उत्थान के लिए जो काम कर सकते हैं, और वहाँ बहुत हमारा सनातन स्वयं सेवक संघ बोलते हैं वहाँ, वो बहुत एक्टिव है. और हम लोग बर्मा से आए हैं और यहाँ जो गाइडेंस मिलेगा उसको वहाँ करेंगे. धन्यवाद. और ये आप धन्यवाद. तो ये साथ में आप ये बताइए कि आपका अगर दुनिया को संदेश अगर कोई देना है तो वो क्या देंगे? एक क्विक संदेश. अगर इस दुनिया को बचाना है और सुखी रखना है तो आपको सिर्फ सनातन धर्म ही फॉलो करना है. और उसी से ये दुनिया में शांति और समृद्धि आ सकती है. जैसे हमारे संघ चालक जी ने बोला है कि बाकी सिर्फ आपका जो मटेरियलिस्टिक सुखी होता है, उससे हमारा जो संस्कृति है उससे आपको आत्मिक और सांसारिक सुखी मिलता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र कुमार जी. तो ये बता रहे हैं कि बर्मा से हैं और ये चर्चा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे सनातन धर्म को आपको फॉलो करना चाहिए. हिंदू वर्ल्ड कांग्रेस आप इसको समझ सकते हैं, 2023 है, बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया, थाईलैंड में. हमारे पास पत्रीदास जी भी हैं. अगर उनका हमें समय मिल सके, उनसे अगर हम चर्चा कर सकें. पत्रीदास जी नमस्कार. 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 So we are from Sudarshan News and we are going to launch Sudarshan World also. So what are your views for this World Hindu Congress 2023 that is being organized? Do you think it will achieve the objective, its aims, and it's going on the right path and will benefit the Hindu society and the world at large? Thank you very much. Hare Krishna. It's so wonderful to see so many great people together. It is explained that all of us, we are different like flowers, but together we are like garland. And garland, as I just came from Nepal, in Nepal they have national anthem, Sayo Tunga Fulko Hami Yeuta Mala Nepali. So we are all different like flowers, but there is one thread, Dharma, which is uniting all of us. And this is very wonderful to see, because one finger cannot do anything, but together it becomes great strength. And in fact, I even wrote one poem. I was just reading, listening and seeing everyone, and I wrote one poem. I would like to, I could share. Sure. This is actually, I was thinking. Is it in English? Yeah. So he's going to recite poetry in a few moments. Yes. Let us find that. So you went to Nepal and you experienced Dharma from the perspective of Nepal. You see, you saw how people. You know what? And I found it. I felt like this is like big orchestra, you know, and everybody playing different instruments. Somebody playing drums, somebody music, guitar, flute, whatever. But we all playing the music of love. So I wrote one poem, Music of Love, which is dedicated to this conference. Global orchestra
which can play the music of divine love. We are all are so different and beautiful indeed. Together we can grow high with the spiritual speed. Like the divine orchestra, we can produce the song which will make all world united, harmonious and strong. The spiritual symphony descending from above, with hearts united in hope and peace, will bring this divine love. In our song, we will use the words smile, unity and joy, cooperation, love and harmony, that darkness to destroy, rejuvenating family. Together we create, to give the solace to the world before it's too much late. Share your happiness with mine, which never had been seen. Create the symphony divine with love as a holy queen. So we are here to create this global love and peace, united in dharma for God, and to bring happiness and light to this world. Thank you. Thank you so much, Patridas ji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. I follow ISKCON. I've been to ISKCONs and namaskar, namaskar. Shall we speak in Hindi or English? Which English we can do. So if I would like to ask you, the World Hindu Congress 2023 as a conference bringing together Hindus from around the world, social activists, thinkers, spiritual leaders, what do you think? How do you think it will benefit the Hindu society at large and the entire globe? Because Hindus, they don't just think about Hindus, but for the benefit of the Hindu society and the world at large. How do you think it is going to benefit? Shivaya Nama. It's a big event. And please, can you tell us about you? And yeah, sure. So the newcomers, they can Yeah. I am Mahashri Sri Yukteswar Swami. I belongs to Tamil Nadu. Previously, I had get sannyas in Madurai Adinam. It's a 1500 years old mat. So now we are doing a separate organization called Bharata Hindu Seva Sabha in Tamil Nadu, all over India. So it's a big event, World Hindu Congress 2023. Big gathering for Hindus, because in India and Tamil Nadu, for Hindus there are some problems. So when we are united with the whole world with the Hindu Congress, so it will be a big empower to the Hinduism. So we try to attend this program. So we thank the Swamis who are organizing this event and the whole team. We are thanking and we are giving blessings to the organizers. So it's very good event. My blessings to them. Shivaya. Thank you so much. Thank you so much. Om Namah Shivaya. So your message from him also. See, everybody is talking about Hindu upliftment and the benefit of the society at large. And we have many people. बहुत से लोग हैं. Yeah. हाँ. Niti Dev, she is the wife of Viplav Dev Tripura. Okay. Hi, नमस्कार. So हिंदी में रखें अंग्रेजी दोनों ठीक है. तो हम अपने हिंदी में इस चर्चा को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमारे जितने भी मेहमान थे अंग्रेजी में जो कंफर्टेबल है उनसे अंग्रेजी में चर्चा कर रहे हैं, जो हिंदी में चर्चा करना चाह रहे हैं उनसे हम हिंदी में चर्चा कर रहे हैं, और ताकि हमारे दर्शक जो हैं हिंदी भी हैं, और हम सुदर्शन वर्ल्ड जो है वो भी लॉन्च करने वाले हैं, उसके बारे में भी बताएंगे. लेकिन आप आज यहाँ पहुँचे हैं, आपको क्या लगता है इससे क्या जो है लाभ है सभी समाज को, हिंदुओं को, और जो विषय हैं क्या आपको लगता है सभी विषय इन सारे मुद्दे जो हैं जो हिंदुओं से जुड़े हैं वो उठाए जाएंगे, उन पर चर्चा हो पाएगी? देखिए, हिंदुओं से जुड़े हुए विषय क्या हैं ये मैं नहीं जानती, आपका उल्लेख किन से है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ और ऐसा जानती हूँ जन्म से, भारत में जन्मी हूँ तो जन्म से ही हिंदू हूँ, और हिंदू कोई मेरा रिलीजन नहीं है. हिंदू मेरा बाय चॉइस एक ऐसी सनातन पद्धति है जिसको हम आगे लेके चलना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो आगे का भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, वो हमारी सोच से जुड़ें, हमारी संस्कृति से जुड़ें, हमारी विचारधारा से जुड़ें, क्योंकि इतने प्रलोभन हैं. आप जहाँ भी जाएंगे बच्चों के लिए डाइवर्जन्स हैं जिन्हें डिफरेंट हम प्रलोभन कहते हैं हिंदी में, लेकिन इन सबसे हमें बचाना होगा, अपनी संस्कृति को बचाना होगा. तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जैसा जो एक प्लेटफॉर्म है जहां धर्म की एकता की बात होती है, जैसे हमारे मोहन भागवत जी ने कहा कि यूनिटी जो है, जब आप पूरा सोच लेते हैं कि क्या है बाहर, लेकिन तब जाके सार मिलता है कि अगर कहीं एकाग्रता मिलेगी, अगर कहीं आपको आगे उन्नति मिलेगी,
वो आपको यूनिटी से मिलेगी, और यूनिटी तभी है जब हम सारे भारतीय खुद को हिंदू माने और हिंदुत्व को आगे लेके चलें। ये एक सनातनी विचारधारा है जिससे हमारे उठने बैठने पहनने ओढ़ने की विचारधारा सामने आती है। और एक संदेश अगर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए यहाँ पर मौका नहीं है, उनके लिए भी, उनका भी कॉन्फ्रेंस है, उनका भी एक पूरा संगठन है जो उसकी भी चर्चा हम कर सकते हैं। महिलाओं का क्या रोल है, क्योंकि हम जब हिंदू एक फैमिली की बात करते हैं तो वहाँ पर जो पूरा धर्म का जिम्मा है, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि हिंदू महिलाएं जो हैं, माताएं बहनें जो हैं, वो उसको ज़्यादा निभाती हैं। पर क्या वहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए या उससे बढ़कर भी बहुत कुछ है? बिल्कुल नहीं, हमारा इतिहास बताता है और वो गवाह है कि यहाँ गार्गी ने जन्म लिया है। गार्गी की विचारधारा को आगे लेकर गई हैं हमारी जीजाबाई माता हों या अहिल्याबाई होलकर जी हों। ऐसे बड़े बड़े नाम बताते हैं कि कैसे महिलाओं ने अपना योगदान इस भारत की भूमि को दिया है। ऐसे अनगिनत, झांसी की रानी का नाम तो सभी के बच्चे बच्चे की मुख पे आज भी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अभी रिसेंटली जो हमारी नारी शक्ति का जो बिल आया है, सशक्तिकरण जिससे हमें मिला है, एक ऐसी एम्पावरमेंट मिली है जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अब बाकी ही नहीं है जहाँ औरतों का प्रदर्शन नहीं होगा। और ऐसे जहाँ वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, जहाँ विचारधारा की बात हो, जहाँ औरत का सम्मान हो, हमारे हिंदू संस्कृति पद्धति का सम्मान हो, वहाँ जहाँ दुर्गा और काली रहती हूँ, वहाँ तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हर जगह महिला को बोलने का भी अवसर मिलेगा। उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके अपनी जो अंदर की भावनाएं हैं, उन विचारधारा है, उसे भी व्यक्त करना पड़ेगा। और एक मैं माता हूँ, एक माँ हूँ मैं, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आगे जाके जो श्री राम है, वो श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हमारी एक ऐसी विचारधारा है। क्योंकि मैं 80 के वर्षों की जन्मी हुई बच्ची हूँ, तो मैंने इन कानों से, अपने कानों में वो सुना था, हिंदू नहीं वो हिंद में जो राम कसम ना खाए, पूरी पूरी कट मरे पर मंदिर वहीं बनाए। और आज जब वो मंदिर बनने जा रहा है, उस मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, और मेरे यंग 18-20 साल के लड़के के मुंह से या बेटी के मुंह से, बेटे के मुंह से ये निकलता है जय श्री राम, तो एक माँ होने के नाते मैं बहुत ही गर्वान्वित फील करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का हर बच्चा, हर बच्ची आगे आए और श्री राम को सिर्फ एक भगवान के नाम के साथ ना जोड़ के हमारे हिंदुत्व के नाम से एक ऐसी विचारधारा को समझे कि कैसे एक बेटा या बेटी को उस विचारधारा को आगे लेके जाना है, जहाँ उसे अपने माँ बाप का सत्कार करना है। एक आपके नाम के साथ एक संदेश, एक मेरा नाम ये है और ये मेरा मैसेज पूरे हिंदू धर्म के लिए और लोगों के लिए, फिर हम इसका करें। नमस्कार, मेरा नाम नीति देव है, मैं त्रिपुरा से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को रिप्रेजेंट करके। मेरा सबके लिए बस यही संदेश है कि यूनाइटेड रहें, एक साथ रहें, हम तभी लड़ सकते हैं उन सारी कुरीतियों से जो समाज में फैली हुई हैं, और आने वाले भविष्य को संवारना और संभालने का दायित्व हम सबके कंधों पे है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए, महिलाओं की भी अगर हमने बात करी तो हर कोई यहाँ पर मौजूद है और हर कोई अपनी विचारधारा यहाँ पर रख रहा है। तो मैं शिवम दत्त मेहता, कैमरामैन अभिषेक के साथ यहाँ पर थाईलैंड बैंकॉक नोंगथमबुरी में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 में। In the new world order, where do we see Bharat and Hindu? Because jihadis have their Al Jazeera and the leftists and conversion gangs have their own ecosystem of BBC, CNN and many more. You may be having many news sources, but what we are focused on is News with an opinion, or simply put, news with strong views. Today, wars are fought not just with weapons, but also through the dissemination of information. We'll talk about Israel-Hamas, Russia-Ukraine war. But what we don't talk about is the information warfare that is taking place right now as we are watching this video. It is a fact that those who fight with weapons have to fight a war of narrative while simultaneously being engaged in conventional warfare. Today, people are in a state of dilemma regarding the role of media in the process of nation building. Frankly speaking, people are unaware of the power of media. With propaganda-driven channels, communist-minded media moguls, and a monopoly of a few organizations,
one is left with no option but to believe in all the information that is fed to them by the channels. These pseudo-secular criminals have normalized presentation of one-sided stories. These news channels with an anti-Hindu narrative and ideology of a divided Bharat, to a large extent have been successful. 20 years ago, the same situation prevailed in Bharat. The news industry was plagued by the monopoly of the so-called intellectuals. All news in India was one-sided. The masses were purposely deprived of the other side of the news. The other side, which was the real news. During those tough times, Sudarshan News came to the rescue by being an alternative source of information for the people of India. And we weren't just an alternative, but the strongest alternative one could have imagined. Since last 2 decades, we have emerged as the sole alternative source of news for the people, becoming the voice of the underrepresented, the voice of the suppressed, the voice of the real victims, the voice of reality. People trust our reportage when it comes to knowing the real truth. We did all of this without any fear of repercussions, without compromising on our fundamentals, our ideology, being the defenders of our faith, defenders of the weak, defenders of the subjugated and of the unheard in our motherland. We now have decided to do the same in the world arena. Bluntly speaking, we have... Hello, so this is Shivam Dutt Mehta and I'm in Bangkok in Thailand, Nong Thamburi at World Hindu Congress 2023, an event which has been organized for Hindu upliftment, a place where people are able to share ideas, their cultures and their views about how they can benefit the Hindu society at large. And this event is the third event if you take it from 2014, then 2018 in Chicago, and then coming now to Bangkok, Thailand. So if we have people from around the globe, and we had somebody from US, somebody from another country, from Canada, Poland, Ireland, all the countries, and we have also from our neighboring country, Bangladesh. And if you can introduce yourself and your message and first of all, why did you come here? What motivated you? Thank you very much. I'm Pallav Acharjee, barrister, practicing in the Supreme Court of Bangladesh. Actually, I'm so delighted that I came to here, and this is the first time I'm here to the World Hindu Congress. And I would like to congratulate all the participants who came here. And I believe those who came here, they will get together and get to know one another. It's a global program, and from our country's perspective, it was really difficult to get touch with the other world, especially regarding Hindus. And it's my, I believe that it's the opportunity I got from here and meet with all the leaders of Hindu Congress. I'm really grateful. So what inspired you first of all, and what do you think how this is going to benefit the Hindus and the unity, and this is an economic forum also? Yeah, thank you. The thing is that we have to be united. What I believe as a lawyer, I believe that we have to be united in order to achieve something. We have to be united, and now we are in an alarming situation. I believe if we don't unite it, one day we will see Hindus in the Jew. I think this is the right time for us to get together and work socially in order to develop our society, our economic. Now it's an era of globalization, and I think we must look after about the economic, how we're going to develop the property, especially in the rural country like Bangladesh or Vietnam, those who are underdeveloped country. And if the richest country, they focus on us, then we can develop. Okay. And how do you think, what's the condition of Hindus in Bangladesh? Before it was like in last 1 decade, it was reducing alarmingly, and now it's 7.95%. And I believe that day by day it will reduce again. So you're from Bangladesh and you spoke about Bangladesh, and thank you so much for your ideas. And we have somebody who has come from Canada, Rajesh Bhatia ji. आप कनाडा से आए हैं. नमस्कार जी, नमस्ते. क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, नमस्कारम, प्रणाम to everyone attending the World Hindu Congress. मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सौभाग्य हमारा, परम सौभाग्य है, हम यहाँ आए हैं अटेंड करने के लिए और बहुत सारे डेलीगेट्स को मिल रहे हैं. बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया संदेश यहाँ से दिया जा रहा है, सारे संसार को बहुत अच्छा
मैसेज जा रहा है, पर्टिकुलरली जो श्री मोहन भागवत जी ने बोला, बहुत ही प्रेरणादायक जो है उन्होंने मैसेज दिया कि जैसे यूनिटी का मैसेज दिया और ये डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट करने की बात की है उन्होंने। और मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि जो यहाँ शायद किसी ने नहीं कही, वो ये है कि संसार में हिंदुइज्म इज़ द लार्जेस्ट वॉलंटरी रिलीजन इन द वर्ल्ड। ये हम कहते हैं जी हम तीसरे नंबर पे हैं। कैसे तीसरे नंबर पे हैं? वी आर द फर्स्ट, नंबर 1। वाई? यहाँ कोई डिसेप्शन से नहीं आया, यहाँ को फोर्सिबली कन्वर्ट करके नहीं आया। हिंदुइज्म इज द लार्जेस्ट वॉलंटरी रिलीजन। यहाँ सारे वॉलंटरीली जो हैं वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं। सो इसलिए हम सबसे बड़े, इन स्पाइट ऑफ मास स्केल कन्वर्शंस फॉर लास्ट सो मेनी सेंचुरीज, वी आर सो कॉल्ड इन नंबर्स थर्ड, बट थर्ड नहीं है हम एक्चुअली। अगर वो काउंट किया जाए जो फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया है, विच वॉज रॉन्ग। उनको आप किसी को किडनैप करके और बोलें कि ये हमारी पार्टी में है, जैसे अगर पॉलिटिकली मैं बोलूं कि हमारे वोट जा, क्योंकि आप किडनैप करके लोगों को बिठाया हुआ है डरा धमका के। हिंदुइज्म ऐसा नहीं है। इस धर्म को जो भी फॉलो कर रहा है अपनी इच्छा से फॉलो कर रहा है, वॉलंटरीली फॉलो कर रहा है, और हमेशा ऐसा ही है। और हमने किसी को डिसेप्शन से भी अपने आप में यहाँ इंक्लूड नहीं किया। सो वी आर दी लार्जेस्ट रिलीजन इन दी वर्ल्ड एंड वी आर दी मोस्ट एंशियंट, जिसको सनातन बोला गया है। ये इटर्नल है। देयर इज नो इटर्नल एवरग्रीन एंड देयर इज नो बिगनिंग नो एंड। सो यही जो है मानवता का धर्म। बिल्कुल। और आपका संदेश लोगों के लिए कि भाई आप यहाँ पर आए हैं, तो अगर आपको मौका, अगर पूरी दुनिया अगर देख रही है सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, सुदर्शन वर्ल्ड के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं छोटा संदेश दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये धर्म वॉलंटरी धर्म है मानवता का। इसी को सारे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम किसी को ये नहीं कह रहे कि जो हिंदू नहीं है उसको ना जीने का हक है या वो लेस इम्पोर्टेंट है। नो, हम ये कह रहे हैं कि ये वॉलंटरी रिलीजन है, सारी मानवता को इसी में आना चाहिए। तभी जो है वो सबका, एक तो जो है आपके आत्मिक ज्ञान का रास्ता खुलेगा, और दूसरा बात यह है कि आपको जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वहाँ तक आप तभी पहुँच सकते हैं जब आप बाकियों को लेसर नहीं समझे। ये नहीं समझे कि जैसे जो दूसरे धर्मों में होता है, जो हमारा नहीं है उसका अस्तित्व भी जो है वो मानने को तैयार नहीं है, और ये मानते हैं कि शायद भगवान भी उससे जो है वो दूर है। ऐसी बात नहीं है। जो कर्म करता है वो सही कर्म करता है, तो यही हिंदुइज्म। तो आप कनाडा से राजेश भाटिया जी थे, हमारे साथ नेपाल से भी जो हैं वो यहाँ पर जो अटेंड करने के लिए डेलीगेट्स हैं वो भी आए हैं। आपसे अगर मैं बात करूँ, हिंदी में रखूँ या अंग्रेजी? हिंदी इज ओके। हिंदी में यहाँ पर चर्चा हम करेंगे। आप सब कब यहाँ पर पहुँचे और क्या कैसे पता लगा और कब आपने यहाँ पर ज्वाइन किया? हम तो पैदा ही हिंदू में हुआ था। हम लोग का तो नेपाल में तो कोई शक ही नहीं। शक नहीं, वो तो हम हिंदू राष्ट्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमको तो हिंदू के बारे में कुछ ऐसा बताना भी नहीं पड़ता है। जहाँ हमारा हिंदू बुलाता है हम तो वहाँ स्वयं चले ही आते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। सो वी आर हियर। आपके नाम के साथ आपका कोई संगठन है या फिर आप इंडिविजुअली आप आए? ऐसे अभी नेपाल में बहुत पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अभी हमारा प्रदीपमान वैद्यदय है, वो हमारा हिंदू इकोनॉमिक फोरम अभी फॉर्म हुआ है, उसमें हम लोग सब आबद्ध है। और वो ही इज एन रोटेरियन ऑल्सो, और सो हम लोग वहीं से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अपना हिंदू तक का यहाँ पर देखा, इतना लोग आए हुए हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम ए हिंदू। और क्या क्या संदेश और आपको क्या लगता है, आपको क्या मौका मिलेगा यहाँ पर अपनी बात रखने का? आप भी बोल सकते हैं। आप Hello, good afternoon to everyone. My name is Dr. Luna Sharma Aryal, and currently I am the charter president of Rotary Club of Naksal Shakti. I am in Rotary International. वैसे मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, फिर भी हम बोल सकते हैं हिंदी में। वर्ल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन 2023 ये कॉन्फ्रेंस में आके अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा भाग्यमानी साबित करना चाहती हूँ, भाग्यमानी मानती हूँ। क्योंकि हिंदुइज्म, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो वर्ल्ड के सारे लोग को जोड़ता है, जो अहिंसावादी है, एकदम हिंसा के मार्ग में नहीं चलता, और भाईचारा बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज़ वेरी मच ब्रदरहुड। और आपका क्या क्या मकसद है यहाँ पर आने का? क्या अपना संदेश बात बताना चाहेंगे? आप भी आ जाइए। आप अगर आप पहले। एकदम सर, हम तो उस कंट्री से आ रहे हैं जहाँ जो वर्ल्ड में जो एकमात्र हिंदू कंट्री था,
एक ज़माने में, दैट इज़ नेपाल। वो जो सेकुलर हो गया और आज भी हमारा वो कंट्री है जहाँ हम हिंदू राष्ट्र को तो वापस स्थापना करने की लड़ रहे हैं। कल भी जो है नेपाल में जो इतने घायल लोग हुए हैं, उन लोग इंजर्ड हुए हैं और आज भी जो वहाँ एजिटेशन चल रहा है कि टू एस्टैब्लिश अगेन अ हिंदू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट विल बी ओनली अ सिंगल कंट्री विच विल बी अ हिंदू कंट्री अगेन। सो हम लोग जो वर्ल्ड में हिंदू कांग्रेस मना रहे हैं, जबकि वो हिंदू कंट्री ऑलरेडी है, तपोवन है और है, उसको जो हम लोग जो बचा नहीं पा रहे, दैट हैज अ मैक्सिमम हिंदू पीपल ओवर देयर। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका हम लोग जो वॉइस रेज कर सकते नहीं कर सकते, ये वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म में वो हमारा कंसर्न का बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाएं तो आई हुई हैं, आपका कुछ अगर कहना चाहें? मेरा पनि बहुत ये प्रोग्राम चाहिँ अच्छी लगता है। मैं नेपाल के ओल्ड हिंदूज इकोनॉमिक फोरम की कोषाध्यक्ष हूँ र सनातन धर्म नेपाल के लिए, इंडिया के लिए र विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यसले भाईचारा को संबंध बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेपाल से और ये और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग भी, आप सुदर्शन न्यूज़ से जो आप लोग इतना कुछ स्प्रेड कर रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ आप इसको और आगे बढ़ाएं और वर्ल्ड में आपको इतना हिंदू को फेमस कर दीजिए, हमारे नेपाल को इतना फेमस कर दीजिए जहाँ से ओरिजिन हुआ है। हम लोग तो हिंदू ही है, पहले पैदा भी हिंदू में हुए थे, अब बड़े भी उसी में रहे, मरना भी उसी में चाहते हैं। और हम अपने आने वाले कल को, भविष्य को भी बताना चाहते हैं, हम लोग हिंदू राष्ट्र चाहे हैं, हम लोग हिंदुज़म है, हम लव हिंदुज़म, उसमें जीना चाहेंगे, उसमें मरना चाहेंगे, उसमें रहना चाहेंगे। हमको कोई और कुछ नहीं चाहिए। बस यही संदेश फैलाना चाहती हूँ। मैं भी रोटेरियन हूँ और ये हिंदू फोरम का मैं अभी पर्सनल रिलेशन और इंटरनेशनल रिलेशन डायरेक्टर भी हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का कुछ कहना चाहेंगे? आप भी कह लीजिए। मैं पुणे से आया हूँ, नरेंद्र उमरीकर, पुणे भारत से। तो जैसा हिंदू जानते हैं कि हिंदू के पास 64 कलाएँ और जैसे मोहन जी ने अभी आज बताया, जो भी अपने पास है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो हम लोग मैं जो इस फील्ड में हूँ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में हूँ, और हम जो नॉलेज जो ग्रहण किया है, MA एस्ट्रोलॉजी करके, BA एस्ट्रोलॉजी करके, PG एस्ट्रोलॉजी करके, तो वो जो नॉलेज है वो एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर ये सब नॉलेज जो है एग्जीक्यूटिव हो जाएगा और समाज को मार्गदर्शन होगा, दुनिया को मार्गदर्शन होगा। बहुत सारी कला है और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ हिंदू कांग्रेस हो रहा है। मैं शिकागो में भी गया था, दिल्ली में भी था और मुंबई में जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर मैं हमेशा रहता हूँ, जो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में का एक पार्ट हूँ। तो ये माध्यम से आज मुझे जो दोनों के जो स्पीचेस हुए उसमें से बहुत सारी बातें समझने के लिए मिली कि वर्क टुगेदर, मर्ज टुगेदर, हम लोगों को हिंदुओं को एक साथ काम करना पड़ेगा, एक साथ एक टीम लीडर बन के दुनिया को मर्ज करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा संदेश यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ। बस यही बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुणे से आप कहाँ से हैं? और आप भी नेपाल से हैं? हम भी नेपाल से। काफी हिंदू आए और एकदम अपनी सोच जो है साफ जाहिर रखते हैं। और नेपाल तो मशहूर ही है और हिंदू धर्म के लिए जो कट्टरता भी है, निभाने की जो आस्था है, जो दृढ़ता है, वो तो सब जानते हैं। आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले क्या बात है कि आपको धन्यवाद। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, आज के दिन में हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो आप लोग के सहयोग से, आप लोग के प्रयास से, आप लोग के प्रयत्न से कम नेपाल भी जो पहले हिंदू राष्ट्र था, दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, ओनली वन हिंदू राष्ट्र नेपाल था, वो पूर्ण कायम हो जाए, यही हम आपको कहना चाहते हैं। कैसे इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बात रखा जा सकता है। हम लोग अपना फील्ड में बात रख रहे हैं, अपना फोरम में बात रख रहे हैं और आगे जो दुनिया के जो हिंदू लोग आए हैं, एक प्रेशर बनाए नेपाल गवर्नमेंट को, नेपाल सरकार को बनाए कि पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र, जहाँ 90% हिंदू लोग वहाँ रहते हैं। हमारे माँ तो इंडिया से बिलोंग करती है, हमारे बहन लोग इंडिया से बिलोंग करती है। लेकिन राजनीति तो बहुत हो रही है ना नेपाल में। वो हैं, दोनों तरफ हिंदू ही हैं, लेकिन वो जो मेल मिलाप था, जो रोटी बेटी का जो नाता जो कहा जाता है, वो उसमें जो खराबी आने लगी है, वो सब जान रहे हैं। वैसा कुछ बात नहीं है। हमारे बहन गोरखपुर से बिलोंग करती है, माँ हमारे बेतिया से बिलोंग करती है, जगह जगह से डिफरेंट पार्ट ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन क्या युवाओं को भड़काया जा रहा है आज के दौर में? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। हिंदू का हम लोग वहाँ पर बहुत अच्छा स्थिति है। जैसे वो रजनीश को मान रहे, उसके बाद भी हिंदू है हमारे दीदी, बहुत हिंदू का वहाँ पर बहुत अच्छा पोजीशन है। हम लोग बहुत एकजुट से साथ हैं। मगर जो नाम था दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र, वो आप प्रयास कीजिए कि हर जगह से उसका एक मूवमेंट बने, वो उसका आवाज़ बात उठे, कम से कम वो जगह चिनारी
दुनिया के कोई चिनारी है, जो जानकी जी का जन्म हुआ है, राम भगवान के ससुरारी है, उस जगह को पूर्ण पशुपतिनाथ जो वहाँ पर स्थित है, उस जगह पूर्ण रूप से फिर हिंदू राष्ट्र हो, ये हमारा रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने देखा हर जगह से लोग जो थे वो आए हुए थे। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 में इनॉग्रल सेशन, इसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है। सभी जो मुख्य जो वक्ता थे वो आके उन्होंने अपने संबोधन जो है वो कर लिया है, और फिर से ये सेशन जो है जो लगातार वो चलता रहेगा, और ये सभी हिंदुओं के लिए एकजुट होने के लिए। और इकोनॉमिक फोरम की जब हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का जो जिक्र मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ, तो वो यही कहते हैं कि यहाँ पर मिलिए, नेटवर्किंग करिए, आपस में जुड़िए, और यहाँ पर व्यापार बढ़ सकता है, भाईचारा बढ़ सकता है, सदाचार, सारी जो आप चर्चा आपस में कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपने विषयों को उठा सकते हैं, और वो मुद्दे जो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं वो सभी मुद्दे इन सभी पैरेलल कॉन्फ्रेंसेज में लगातार यहाँ कॉन्फ्रेंसेज चलेंगी। हिंदू यूथ ऑर्गेनाइजेशन, विमेन कॉन्फ्रेंस, हिंदू फोरम और उसके साथ इकोनॉमिक फोरम, सब चलता रहेगा। तो मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और कैमरामैन अभिषेक को आज्ञा दीजिए। सुदर्शन न्यूज़ से हम लोग हैं थाईलैंड से। नमस्कार, मैं हूं शिवम दत्त मेहता और आज हम हैं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 में, और हम इस वक्त हैं थाईलैंड में बैंकॉक नोंगथाम्बुरी इम्पैक्ट एग्जीबिशन अरीना सेंटर में, जहां पर रॉयल जुबली हॉल में, जो बॉल रूम में ये पूरा आयोजन जो है वो किया जा रहा है। और जो अतिथि हैं, जो मेहमान हैं, वो लगातार आते जा रहे हैं, और सभी जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म के उत्थान की बात करते हैं, हिंदू समाज की रक्षा की बात करते हैं, वैसे लोग, समान विचारधारा के लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जुड़ रहे हैं। और ऐसे ही कई मेहमानों में से एक जस्टिस एस.जी. शाह जी भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वक्त हमारे साथ हैं। विचारों की बात करेंगे, यहाँ पर आने का क्या मकसद क्या था, चाहते क्या हैं, और इस पूरे आयोजन की अगर मैं बात करूं पहले तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 आपके हिसाब से ये क्या है? नमस्कार सब सुनने वालों को। मैं अहमदाबाद गुजरात से ये वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस 2023 में एज ए अटेंडी पार्ट लेने आया हूँ। यहाँ की व्यवस्था अद्भुत, अवर्णनीय और बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है। सब अरेंजमेंट इतनी अच्छी है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो हम भाई साहब ने पूछा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो ये आज पूरे वर्ल्ड में स्थिति ये है कि हिंदू धर्म को अगर हम बचाएंगे नहीं, सनातन धर्म को बचाएंगे नहीं, तो पूरा जो ये धर्म है वो बिगड़ने वाला है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि सारे वर्ल्ड में से, अमेरिका से, एशिया के अलग कंट्रियों से और भारत से और कहीं से सारे बहुत लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और हिंदू धर्म को कैसे आगे बढ़ाए, हिंदू धर्म की क्या व्यवस्था है, हिंदू धर्म में क्या क्या अच्छा है, उसकी चर्चा करेंगे। अच्छे स्पीकर है। हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी यहाँ स्पीकर हैं। बहुत सारे अच्छे स्पीकर हैं यहाँ। हिंदू धर्म के बारे में हम सब एक दूसरे के विचार विमर्श करेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे और धर्म को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो सीनियर हैं वो तो आ ही रहे हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश है? उनके लिए भी कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन किया गया है, उनको कैसे आप जोड़ना चाहेंगे? खाली ये यहीं तक ही सीमित ना रहे ताकि और भी लोग इससे जुड़े, लाभ इसका ले सकें। हाँ, मैं युवा वर्ग को ये कहना चाहूँगा कि राइटली और रॉन्गली हम धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन पर मूव हो रहे हैं। उसको छोड़ के हिंदू धर्म को ही सारी चीज़ें देखें, हिंदू धर्म के अच्छे बातें सुने और हिंदू धर्म को अंगीकार करें और हिंदू धर्म का प्रचार करें। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में पर्यावरण, जीव और वनस्पति को मार के काट के ख़त्म करने से कितनी गर्मी हो रही है, और अगर ये नई जनरेशन ये नहीं देखेगी, नहीं सोचेगी, तो शायद भविष्य में सबको बहुत परेशानी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। और भी अतिथिगण इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे भी उनकी राय लेंगे। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 क्या मकसद है, क्या इससे लाभ हो सकता है, हिंदू धर्म के उत्थान की अगर बात की जाए तो कैसे? धन्यवाद। विश्व आज प्रगति के दौर में है। आजकल वो प्रगति हो रही है जो आज तक भविष्य में विद्यमान जितने भी फैक्टर्स हैं, मानवतावादी हैं, सामाजिकतावादी हैं, फाइनेंशियल हैं, इकोनॉमिक हैं, हर तरह की प्रगति केवल हिंदुत्व और हिंदुत्व के धर्म और उसके सिद्धांतों पर ही चल सकती है। उदाहरण के लिए आज मानवता समाप्त हो रही है,
मानव मूल्य समाप्त हो रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या समाज हो। मैं वेद व्यास द्विवेदी, इंडस यूनिवर्सिटी गुजरात भारतवर्ष से, भारतीय ज्ञान परंपरा ही केवल मनुष्य मात्र की मूलभूत आधारशिला है, इसी से उन्नति संभव है। इसके कारण से ही हम जमीन से लेकर के आसमान तक आज सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। किसके आधार पे? आज कल को स्पेस ट्रैवलर्स को हम भेजने वाले हैं। स्पेस ट्रैवलर्स अगर हिंदुत्व के सिद्धांत का पालन करते हैं तो वे वहाँ स्वस्थ रहेंगे। 2-2 साल नहीं, 20-20 वर्ष तक जाने के बाद भी वो वहाँ स्वस्थ रहेंगे। इसलिए भारतीय हिंदुत्व परंपरा ही मानव समाज की उच्चतम और सबसे वैज्ञानिक आधारशिला। बिल्कुल। और ये जो आयोजन किया गया है, पीछे आप देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर, उसका पूरा एक छवि, उसकी पूरा एक डिजाइन जो है वो किया गया है, वो बनाया गया है। राम मंदिर भी है, भारत माता की भी मूर्ति यहाँ पर जो है, वो मूर्ति जो है वो तैयार की गई है, शेर पर विराजमान वो हैं, झंडे के साथ हैं। आप क्या कहेंगे, ये क्या एक मैसेज अगर दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है? राम मंदिर यहाँ पहले ही बन के तैयार है पूर्ण तरीके से, और यहाँ पर काशी विश्वनाथ भी मंदिर भी है, भारत माता जी की भी मूर्ति भी है। पूर्ण पुरुषोत्तम उनका नाम ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्ण पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? पूर्ण से पूर्ण को भी अगर निकाल देते हैं तो पूर्ण ही शेष रहता है। यह इसका सिंबॉलिज्म है। यह ये बताता है कि भारतीय परंपरा और ज्ञान जो पद्धति है उसमें वो पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण को निकाल भी देते हो तो पूर्ण ही बचता है। इसी तरह से भगवान शिव कल्याण के स्रोत है, कभी भी उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया। इसी तरह से यह जो विश्व हिंदू सम्मेलन यहाँ आज हो रहा है बैंकॉक में, यह प्रूव करने के लिए है कि मानवता के लिए सबसे जो अच्छा कर्म है, धर्म है, कर्तव्य है, वो हिंदुत्व है, और हिंदू ही करते हैं, कभी किसी का नुकसान नहीं करते। इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वेद व्यास द्विवेदी जी, वो हमारे साथ थे, उन्होंने समझाया क्या उद्देश्य है, क्या कारण है और क्या लाभ जो है लोगों को मिल सकता है। मैं दिखाऊंगा कि लोग अभी भी यहाँ पर आते जा रहे हैं, और हम दिखाएंगे ये पूरा हॉल है और खचाखच ये भरा हुआ है, हर कोई आ रहा है और यहाँ पर एक अपनी फोटो जरूर क्लिक कराता है, एक फोटो जरूर क्लिक करा रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ फोटो क्लिक करा रहे हैं एक यादगार के तौर पर? बहुत ही रंगम त्रिवेदी, गुजरात से हूँ, भारत से, और बहुत ही गौरव होता है जब विश्व का कल्याण करने वाला एक समाज एकत्रित होकर एक दिशा में संगच्छध्वम संवदध्वम की दिशा में काम करने के लिए एकत्रित हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात कि हम युवा अवस्था में इस अवसर पर शामिल हो रहे हैं, और इसलिए गौरव से हम यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं और सब साथ में मिलकर एक दिशा में आगे बढ़ेंगे, विश्व को आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, कितने लोग आए हैं आप? आपका ग्रुप है, क्या है? जी, हम 6 लोग आए हैं भव्य भारत फाउंडेशन की ओर से, वडोदरा गुजरात से। गुजरात से काफी लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हिंदू चेतना की बात की जाए, हिंदू धर्म की बात की जाए, प्रोत्साहित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं? क्या वहाँ पर जो विचारधारा की बात अगर की जाए, हिंदुओं की बात जब की जाती है तो एकजुटता की कमी दिखाई जाती है, लेकिन गुजरात की जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो गुजराती मुझे काफी नजर आ रहे हैं। पहले आपसे। रुक्मिल शाह, गुजरात वडोदरा से। जैसे कि हम जानते हैं कि गुजरात एक सांस्कृतिक नगरी के तौर पर एक देखते जाए तो कलात्मक संस्कृति वहाँ से जुड़ी हुई है, और जब फेस्टिवल के बारे में बात होती है तो नवरात्रि हो या कोई भी फेस्टिवल हो, और जब हिंदुइज्म जब एकत्र होने का हो, सब एक होकर कैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा सकता है, तो गुजरात सबसे बढ़ावा देता है। तो गुजरात से भी ये कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लोग जुड़े, और एक युवा होने के नाते हम भी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े, तो हमारे लिए पर एक गौरव की बात है। बिल्कुल, युवाओं के लिए गौरव की बात है। हमारे पर हर वर्ग के और हर उम्र के जो लोग हैं वो हैं, युवा हैं, अधेड़ उम्र के हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, हर कोई यहाँ पर आ रहा है। आपसे क्या आप समझते हैं कि ऐसे जो ऑर्गेनाइज किया जाता है कॉन्फ्रेंसेस का, इससे लाभ क्या होगा लोग? एक तो भारत का वसुदैव कुटुंबकम का मंत्र जो है वो आज सारे विश्व के लिए जरूरी है, आवश्यक है, और इस मंत्र को चरितार्थ करने की जिम्मेदारी जब भारत लेता है, विश्व गुरु भारत की जब बात हम करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम विश्व को एकत्रित करें, विश्व में जो वसुदैव कुटुंबकम के जरिए जो सुख, शांति एवं हमारा जो संकल्प है उसकी परिकल्पना चरितार्थ हो। तो इसके लिए हमको हिंदू समाज को एकत्रित होना पड़ेगा, और हिंदू समाज तय करेगा कि शांति कैसे दुनिया को दे सकते हैं, और इस दर्शन को हम चरितार्थ करने के लिए हम यहाँ चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। ये कार्यक्रम विश्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक ये कार्यक्रम है। और भी लोग जुड़ रहे हैं। आपका नाम गुड्डू सिंह जी। गुड्डू सिंह जी, आप कहाँ से हैं और क्या उद्देश्य लेके आए हैं, क्या सीखने आए हैं या क्या संदेश देने आए हैं?
सर मैं भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से हूँ। मैं विगत 16 वर्षों से थाईलैंड में ही हूँ और हिंदू श्रम सेवक संघ के तहत जो संघ परिवार भारत से बाहर जब काम करता है तो राष्ट्रीय श्रम सेवक की जगह हिंदू श्रम सेवक कहा जाता है। हम लोग यहाँ विश्व हिंदू परिषद और HSS थाईलैंड मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं। मैं लखम प्रथम प्रोविंस का विभाग प्रमुख भी हूँ और यहाँ एज ए वॉलंटियर सारी व्यवस्था हम लोगों के जिम्मे है। हर 4 वर्षों में देश के विभिन्न कोनों में ये जो है, तो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने में वो हैं कि कौन कैसे बैठेगा, कौन कहाँ रहेगा, हम लोग के ही जिम्मे है। टोटल यहाँ की व्यवस्था हम लोग महीनों से लगे हुए हैं और कैसे प्रोग्राम होगा। देश के 70 से 80 देशों से लोग यहाँ हिंदू श्रम सेवक या हिंदू से जुड़े जो भी लोग हैं यहाँ आए हैं और एक ऐसा मंच बनाया गया है। हर 4 साल पे होता है। इसके पहले शिकागो में हुआ था, इस बार थाईलैंड का या यहाँ पे है। विश्व हिंदू परिषद इसको ऑर्गेनाइज करता है और हिंदू श्रम सेवक संघ इसके साथ मिलकर, हम लोग एक ही श्रेणी के हैं तो हम लोग इसको काम करते हैं। 4 दिनों का यह है, 24, 25 और 26, 3 दिन। हाँ 23 से आज मुख्य कार्यक्रम आज से है, 24, 25 और 26 है। तो एक हिंदुओं का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। आप देख रहे हैं हर देश, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे देशों के हिंदू श्रम सेवक आए हैं और हम लोग भारत से हैं और यहाँ संघ परिवार को के अंतर्गत काम करते हैं। मैं विगत 10-15 सालों से मैं संघ की शाखा हूँ और यहाँ पे संघ के रूप में काम करता हूँ। बिल्कुल, ये आपकी इस बात को भी दाद देनी पड़ेगी कि कई सालों से आप सेवा यहाँ पर कर रहे हैं और ये जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू सिंह जी। आपसे फिर चर्चा करते रहेंगे। अभी हम यहाँ पर 2-3 दिन तक मौजूद हैं और ये देखेंगे। अब जैसे ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो मुख्य जो समारोह जो किया जा रहा है, जो कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, आप एंट्री गेट देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज हॉल के नाम से इस हॉल को, जो रॉयल जुबली बॉलरूम है हॉल है, उसको उसका नाम जो दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से दिया गया है। हिंदू पतशाही के फाउंडर, उसके द गार्डियन ऑफ हिंदू धर्मा एंड सोसाइटी, हिंदू धर्म के और समाज के रक्षक के तौर पर उनका यहाँ पर चित्रण जो है वो किया गया है। उनके डिटर्मिनेशन, उनके जो डिवोशन, लिबरेटेड एंड सैक्रेड लैंड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द मुगलों से, आदिल शाही सल्तनतों से उनकी लड़ाई की जो चर्चा है वो जिक्र उनका वो किया गया है, उसके बारे में बताया गया है और उनको सम्मान देते हुए ये हॉल का जो नाम है इस समारोह के लिए छत्रपति शिवाजी हॉल के तौर पर किया गया। और आप ये देखिए, हम आपको अंदर दिखाएंगे। भव्य से भव्य आप समझिए, एक विशाल ये हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है और यहाँ पर आप देखिए, आप देखेंगे कि कम से कम 2000 से ज्यादा लोग जो है वो बैठ सकते हैं। यहाँ पर समारोह शुरू हो चुका है और आप देखिए ये बहुत बड़ा ये हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है और यहाँ से जो लोग आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं और ये कुछ ही समय में पूरा हॉल जो है वो भर जाएगा। भरते भरते यहाँ पर इतने लोग आ चुके हैं। सभी आगे जितने भी माता अम्मा जो है वो आगे बैठी हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। इस वक्त हम थाईलैंड में बैंकॉक में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 को कवर करने पहुंचे। हमारी पूरी टीम यहां पर पहुंची है और इकलौती टीम के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं मीडिया की तरफ से, जिसको ये सौभाग्य मिला है कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस को कवर हम यहाँ पर करें। और तमाम लोग यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी राय रखते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं, हिंदू उत्थान की बात करते हैं और अपना नज़रिया सबके साथ साझा करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र लोग आ रहे हैं। और उसी के लिहाज से एक और व्यक्ति मेरे साथ हैं, हिमांशु यादव जी। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा उद्देश्य क्या है। मैं हिमांशु यादव दिल्ली से हूँ, बीजेपी में एक्टिव हूँ और अपना बिजनेस है प्रॉपर्टीज़ का, वो सब संभालते हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उन सबसे मिलना हो जाएगा और उनकी पॉजिटिव एनर्जी, जो उनका स्ट्रेंथ है, वो उसका ज्ञान हमें यहाँ मिलेगा। एक्चुअली में हम कितने शक्तिशाली हैं वो यहाँ देखने को मिल रहा है वर्ल्ड वाइड आके। सिर्फ हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, देश की बातें करते हैं, लेकिन हम हिंदू वर्ल्ड में कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो हमें यहाँ आके देखने को मिल रहा है। कितने बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हम लोगों के साथ हैं, यहाँ पर हैं और हम सब आपस में बात कर रहे हैं, आपस में एक कुछ विषयों पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं, कुछ विषयों पे खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हमारी सरकार कैसे चल रही है। हम सभी लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपने पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंड्स यहाँ पर एक दूसरे से साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये मैं सभी को समझाना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक फोरम की बात करी जाती है, अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, जो कि अहम मुद्दा है।
इस वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का भी। और यहीं पे एक जो व्यापारी वर्ग है वो भी अगर यहाँ पर आ रहा है तो जुड़ेंगे क्या साथ में जुड़ेंगे, व्यापार करेंगे क्या? सभी अपने अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज कर रहे हैं। कैसे वो लोग यूएस में, यूके में, ब्रिटेन में सब जगह जाके बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मॉडल डेवलप कर रहे हैं, ये सब एक्सचेंज हो रहा है। और हम सभी को आपस में एक दूसरे के वो बातें एक्सचेंज करने में अच्छा भी लग रहा है और अच्छी सेटिस्फेक्शन भी फील हो रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है। और आप क्योंकि युवा वर्ग के तौर पर मैं आपको अगर देखूं